What which Odia poet was honored with sorry which Odia poet woman was honored with Utkal Bharati Award in 1925 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ ଯିଏକି କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କେବେ ନା 1925 ମସିହାରେ ତ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଅଥର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆସିବେ କିଏ ନା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହେଲା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରିମେମ୍ବରିଂ ପାୱାର ଟେଷ୍ଟ ହବ ଯେ ଆପଣ କେତିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା କେତିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ with Indian state has its maximum area under the forest cover ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା ତ maximum forest cover କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ highest ବା its maximum area under the forest cover जोटा ଆପଣ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2023 ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବା maximum area under the forest cover ତ ପିଲା ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ that is ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓକେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନେ ରଖିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ମାର୍କ କରିବେ କ'ଣ ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓକେ ଯଦି ଥାର୍ଡରେ ଆପଣ ପଚାରେ ତ ମନେ ରଖିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓକେ ଏ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପଚାରିଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ NH44 ହେଲା ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀନଗରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଓକେ ଯଦି ଆମେ ଲେନ୍ଥ ଦେଖିବା 4112 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଆର କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ବୁଝିଲା ତ ମନେ ରଖିବ ଇଏ ନର୍ଥ ସାଉଥ କରିଡରରେ ଯିବ NH44 ଶ୍ରୀନଗରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବ 4112 କିଲୋମିଟର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ who is the first woman judge in the Supreme Court first woman judge in the Supreme Court କାରଣ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ M ଫତିମା ବିବି ଓକେ ମନେ ରଖିବ M ଫତିମା ବିବି ଓକେ ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି which is the longest river dam of the world longest river dam বা longest earthen river dam of the world earthen ଓକେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମନେ ରଖିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଓକେ ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ଆସିବ 25.79 କିଲୋମିଟର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ନୋବେଲ ଆନନ୍ଦ ମଠର ନୋବେଲ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବେ ରାଇଟର କିଏ ହେଇଯିବେ ଏଟା ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମନେ ରଖିବ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଓକେ ଯୋଉଟାକି 1882ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ହିଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ in which field professor अमर्त्य सेन got the Nobel Prize ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ସାଇନ୍ସ ବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତ ୱେଲଫେୟାର ଇକୋନୋମିରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ୱେଲଫେୟାର ଇକୋନୋମି ओके वेलफेयर इकोनॉमी रे पाइथिले जोटा कि 1998 रे से पाइथिले नोबेल प्राइज नेक्स्ट देखो बिले नेम द करेंसी नोट्स ऑफ ब्राजील ईरान ग्रीस सिंगापुर स्विट्जरलैंड रूसिया
से गुड़ाकर आपन को करेन्सी पचारछि हैला एग्जाम रे आपन भी आसे तो एगुडा को आपन मन रखिबे गोटे दिटा गोटे माने क्वेश्चन ता आपन जेमि देले माने कैपिटल रु आसीबो न ना एदर करेन्सी रु आसीबो हैला तो देखो ब्राजिल रो कोन होई जिवो ब्राजिल होई जिवो रियल आर ई ए एल ईरान रो कोन होई जिवो रियल आर आई ए एल रियल ग्रीस रही जिवो कोन यूरो बुझिला सिंगापुर रही जिवो कोन ना सिंगापुर डॉलर हैला सिंगापुर डॉलर नॉट डॉलर सिंगापुर डॉलर ओके स्विट्जरलैंड रो कोन होई जिवो स्विस फ्रांक हैला स्विस फ्रांक आ रूसिया रो कोन होई जिवो रूबेल हैला रूबेल तती जिंसटा आपण मन रखिबे नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर कोन होई जिवो रिमेम्बर अच्छी तो ये मन रखिबो उत्कल दीपिका उत्कल दीपिका केबे आसिला ना 4 अगस्त 1866 रे एस्टाब्लिश हैला ओके माने के स्टार्टिंग करथिले एटा भी आपण पचारि पारे स्टार्टेड बाय गौरी शंकर राय एंड बैचित्र नंद दास गौरी शंकर राय एंड बैचित्र नंद दास सॉरी विचित्र नंद दास विचित्र नंद दास ହେଲା ତ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଯିବେ ସେଟା ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସୁଚିତା କ୍ରିପାଳିନ ସୁଚିତା କ୍ରିପାଳିନ ଦେଖ ପିଲେ ଏମିତି ନବାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ऑब्जेक्टिव नहीं तो आपन को रिमेम्बर करी लिखिबार अछि सुचेता कृपालिन ओके जे कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बा वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया स्टेट कोड हिजबो ना यूपी रे से कोन हितले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हितले नेक्स्ट देखो देछि कोन हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुज उ आपन को पढै छी ओके तो से भीतर गोटे आपन क्वेश्चन आसिला कोन जोडा कि वर्तमान ट्रेडिंग टॉपिक अछि हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन पारिबो एटा मन रखिबो विक्रम मिश्री हैला विक्रम मिश्री होचंदी कोन वर्तमान बा प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया बा एनएसए प्रेजेंट एनएसए के जिबे हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया सेटा मन रखिबो आंसर आसीबो कोन ना अजित कुमार दोभाल अजित कुमार दोभाल ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द स्ट्रांगेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी स्ट्रांगेस्ट मसल कोन हो जिवो ह्यूमन बॉडी रो कोन पारिबो स्ट्रांगेस्ट तो आंसर आसीबो कोन दैट इज द मास्टर मसल हैला मास्टर एम ए एस एस ई टी आर मास्टर मसल कोडे देखा जाए ना जॉ हैला इन द जॉ हैला ना जो थोड़ी रे आपन कोन देखा जाए सब स्ट्रांगेस्ट मसल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स का डब्ल्यूबीसी रो प्राइमरी फंक्शन कोन हो जिवो कोन पारिबो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी तो आसो कौन डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज तो मन रखिबो डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज बुझिले नेक्स्ट देखो नेम द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड
Name the only floating national park in the world. କଣ ହେଇପାରିବ? ସେଟା ମନେ ରଖିବ କ୍ୟୁବୁଲ ଲାମଜାଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଲା। କ୍ୟୁବୁଲ ଲାମଜାଓ ଲାମଜାଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଅଛି ନା ମଣିପୁରରେ ଆର ଲୋକେସନ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which river form the largest delta in the world? Which river form the largest delta in the world? କଣ ହେଇପାରିବ? Which river form the largest delta in the world? କଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର? ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଗଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ who preside over a joint session of parliament? Who preside over a joint session of parliament? କଣ ହେଇପାରିବ? ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଦ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା ହେଲା ଲୋକସଭା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବେଲେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଇନ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି। ତ ପଚାରୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଗୁଡାକର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ କଣ ହେଇଯିବ? What is the primary function of platelets in the human body? ସେଟା ମନେ ରଖିବ to prevent and stop bleeding. Stop bleeding. Next ଦେଖ the Garba dance is associated with which Indian state? ତ ପଚାରୁଛି ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କାହା ସହିତ associated ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଆସିଛି ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ? ତା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ। କଣ ହେଇଯିବ? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ଗୁଜରାଟ। ବୁଝିଲା ଗୁଜରାଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ what is the largest gland in the human body? Largest gland in the human body କଣ ହବ? What is the largest gland in the human body? କଣ ଆସିବ? ସେଟା ମନେ ରଖିବା ଆସିବ କଣ ନା ଲିଭର ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଇଛି 21 ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ। ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ କଣ ହେଇଯିବ? ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ନେମ୍ ପଚାରିଛି ହେଲା କଣ ହେଇପାରିବ? ସେଟା ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଓକେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଯୋଉଟା କି ମେଡ୍ ମାନେ ପୁରା କଣ ଭାରତରେ ହିଁ ବନାଇଥିଲା ଆଉ ନିଜ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଏପ୍ରିଲ 19 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 19 1975 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୟୁଜ କରିଥିଲେ କାହାର ନା ସୋଭିଏତ କସ୍ମୋସ ହେଲା ସୋଭିଏତ କସ୍ମୋସ 3M ରକେଟ ହେଲା ୟାର ୟୁଜ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରି ପାରେ ସୋଭିଏତ କସ୍ମୋସ 3M ରକେଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଧଉଳି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ୱିଚ ଏମ୍ପେରିୟର। ତ ପଚାରିଛି ଧଉଳି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା କୋଉ ଏମ୍ପେରିୟର ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସେଟା ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ଏମ୍ପେରିୟର ଅଶୋକା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେମ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି କଣ ହେଇପାରିବ? ନେମ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି। କଣ ହେଇପାରିବ? ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ଷ୍ଟେପ୍ସ STAPES ହେଲା ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ମିଡିଲ ଇୟର ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ମିଡିଲ ଇୟର ରେ ଦେଖାଯାଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ୱିଚ ସିଟି ଏଟା 10 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଲେଖ ହେଲା 10 ଷ୍ଟେପ୍ସ
which city is known as the Silicon Valley of India? Silicon Valley of India कोड़ा हिजिबो को सिटी के आमे कहिबा आंसर आसीबो कोन ना बेंगालुरु बुझिले नेक्स्ट देखो क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट तो क्यूबुल लामजाओ सिंगल एल हला को स्टेट हिजिबो पढ़ेइली आसीबो कोन ना मणिपुर बुझिले नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फेमस इंडियन बिल्डिंग्स डिड द 1945 इंडियन नेशनल आर्मी बा आजाद हिंद फौज ट्रायल्स टेक प्लेस जदि हम देखिबा को प्लेस रे 1945 रे इंडियन नेशनल आर्मी बा आजाद हिंद फौज रो ट्रायल हेइतला बोली पचारछि प्लेस द नेम सॉरी नेम द प्लेस कोन हे परिबो तो आसीबो कोन ना रेड फोर्ट इन दिल्ली ओके नेक्स्ट देखो देइछि in which of the following states Bandipur Tiger Reserve and National Park located तो बांदीपुर वो टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क को स्टेट रे आपन को देखियो मिलियो कोन हे परिबो तार आंसर हे जबो कोन दैट इज कर्नाटक कर्नाटक कोन रखिबो नेक्स्ट देखो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो पचाछि ऑप्टिकल फाइबर को प्रिंसिपल ऊपर काम करे बोली पचाछि ऑप्टिकल फाइबर कोन हे परिबो तो बोले ऑप्टिकल फाइबर आम देखा ये आसो कौन ना टी आई आर ऊपर कौन करे टी आई आर प्रिंसिपल ऊपर काम करे दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुझला रिफ्लेक्शन कौन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो काकोरी कॉन्स्पिरेसी also called Kakori conspiracy case or Kakori train robbery took place in which of the following years following নাই এটা কোন কোন হবো which of the years বা which in which year ହେଲା in which year कोन हे परिबो काकोरी कॉन्स्पिरेसी बा काकोरी ट्रेन रॉबरी केबे हेतिला बोली पचारछि डेट पचारछि आपन गोटे एटा मन रखिबो पढेथिले आपन अगस्त 9 1925 ओके नेक्स्ट देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड द बरदोली सत्याग्रह इन द ईयर जदि हम देखिबा सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदोली सत्याग्रह को ईयर स्टार्टिंग करथिले कोन हे परिबो तार करेक्ट आंसर हे जबो कोन 1928 हला 1928 रे कोन हेतिला ना बरदोली सत्याग्रह स्टार्टिंग हेतिला बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट देखो देखो देइछि द वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल्स आर तो पचारछि एटा आपन कोन टीवी रिमोट रे को वेव देखा जाय बोली पचारछि कोन हे परिबो तो टीवी रिमोट पे आसीबो कोन ना दैट इज इंफ्रारेड वेव्स हला नेक्स्ट देखो which article in the constitution of India provides special provision as to finance bill देखो पहले special provision to finance bill को आर्टिकल आपनर मेंशन अछि बोली पचारछि special provision as to financial bills एडा आसीबो कोन ना आर्टिकल 117 हला आर्टिकल 117 नेक्स्ट देखो in which of the following years the 44th amendment eliminated the right to acquire hold and dispose of the property as a fundamental right बुझिला नहीं माने को जोटे 44th amendment को ईयर हितला बोले आपण पचारछि जोथिरे कोन हितला ना प्रॉपर्टी को कोन करे थिला गोटे लीगल राइट बोला हितला हला बुझिला ना नहीं नॉट ए फंडामेंटल राइट तो ईयर केबे हिजिबो जोटा 44th amendment आसीथिला तो ये आसीबो केबे ना 1978 रे नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज दोधोबेता पीक सिचुएटेड दोधोबेता पीक को हिल रेंज रे आपनर आसीबो तो ये आसीबो कोन दैट इज
नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रो फाउंडर किए हिजिबे? हु वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? तो मन रखिबा आंसर आसीबो कोन ना बी आर अंबेडकर। बुझला बी आर अंबेडकर। जदि हम ईयर देखिबा 30 सेप्टेम्बर ओके 1956 रे कोन होइतिला ना फाउंडेशन बा फाउंडेड करथिले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो पहले देइछि कोन 36 देइछि कोन इंडिया दैट इज भारत shall be union of states the कोड लिखा हिसी ना एडे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मेंशन अछि हला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ये कोन अछि ना मेंशन अछि। द वर्ड यूनियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? तो पचाछि यूनियन टा को माने को कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी छै कोन हे परिबो? तो यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन रो एडॉप्टेड हेछि बा बोरोड हेछि। तो एटा मन रखिबो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझला ना नहीं। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच रिवर ऑफ इन इज द मजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड? इन व्हिच ऑफ द रिवर्स इज द मजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड? एटा को रिवर रे आसीबो कोन हे परिबो? तार करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना ब्रह्मपुत्र। बुझला ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट देखो, ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर द बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशनड इन ऋग्वेदा टुक प्लेस? जदि हम देखिबा ऋग्वेदा रे कोन लिखा हिसी ना द बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो एटा को रिवर साइड रे हितला बोली पछाडछि कोन हे परिबो? तार करेक्ट आंसर हे जिवो कोन दैट इज परशुनी। ओके परशुनी, परशुनी रिवर बा को आमे वर्तमान कोन कहबा ना रवि रिवर हला। किंतु आपण गोटे ऋग्वेद अनुसार जेहेतु पचारछि आपण एटे परशुनी रिवर ही मार्क करिवे हला। वर्तमान परशुनी रिवर को रवि रिवर बोली कहा जाय। नेक्स्ट देखो, द डेस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कोन हिजिवो कोडा हिजिवो? तो आसीबो कोन ना द सेरिबेलम। सेरिबेलम ओके मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो, देखो पहले देइछि कोन नेक्स्ट देइछि व्हिच मुगल एम्पायर एबोलाइज्ड जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम? व्हिच व्हिच मुगल एम्पायर एबोलाइज्ड जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम? कोन हे परिबो? आंसर आसीबो कोन दैट इज अकबर। नेक्स्ट देखो, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 ब्रोक आउट? जदि देखिया हमें 1857 रिबेलियन रे गवर्नर जनरल किए थिले भारतर? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिबेलियन 1857 बा सिप म्यूटेनेट समय रे हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आंसर आसीबो कोन लॉर्ड केनी। ओके नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पचारछि ओके से अनुसार देखिबो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट से आसीबे कि ना आनी बेसेंट। आनी बेसेंट जोटा कि ईयर हेजिबो केते 1917 रे। एटा 50 जदि फर्स्ट इंडियन वुमेन बोले आपण मार्क करथांदे कोन सरोजिनी नायडू जोटा कि 1925 रे से कोन गले प्रेसिडेंटशिप करथिले। ओके नेक्स्ट देखो, पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल इन व्हिच सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929? जदि हम देखिबा आईएनसी रो 1929 रे कोन हेतिला पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा जायतिला। तो एटा को सीजन बा सीजन टा कोड हेतिला बोली पचारछि मार्क द प्लेस बोली पचारछि बा प्लेस आपन गोटे पचारछि। एटा आसीबो को सीजन ना लाहौर सीजन। लाहौर
सीजन बुझला ना नहीं जोटा कि लाहौर सीजन माने यार प्रेसिडेंट किए करथिले बा अध्यक्षता किए करथिले ना जवाहरलाल नेहरू ओके नेहरू नेक्स्ट देखो which plains are formed by the older alluviums ହେଲା which plains are formed by the older alluviums बा older alluviums को हमें कौन कहिबा कौन ही परिबो तो एटा मन रखो आंसर आसीबो कोन ना भांगर प्लेन्स ओके नेक्स्ट देखो in which name the river Ganga known as known as in Bangladesh तो आम जब देखा बांग्लादेश रे रिभर गंगार नेम कौन हो आंसर आसीबो कोन दैट इज पद्मा ओके पद्मा नेक्स्ट देखो देखो 46 देइछि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट को स्टेट रे आसीबो ये आंसर कौन आसीबो ये आसीबो कोन दैट इज मध्य प्रदेश ओके स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश नेक्स्ट देखो द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन हो तो ये आसीबो कोन दैट इज भाक्रा डैम बुझला ना नहीं भाक्रा डैम कोड आसीबो ना ये सतलेज रिवर ऊपर आसीबो सतलेज रिवर ऊपर आसीबो जोटा कि हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब रे आसीबो हला नेक्स्ट देखो नेम द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड कौन हो पारिबो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कौन हो जिवो तो आसीबो कोन ना द अफ्रीकान रिफ्ट वैली द अफ्रीकान रिफ्ट वैली मन रखिबो नेक्स्ट देखो नेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन हो पारिबो तो आंसर आसीबो कोन दैट इज ओजोस डेल साल्डो सॉरी सालाडो हैला साल्डो बुझिला नहीं जोटा कि एंडिस माउंटेन आपन को मिलिबो लोकेशन हैला जदि हम देखिबा ये कोड देखा जाए ना साउथ अमेरिका रे देखा जाए हैला जदि हम देखिबा को दीटा कंट्री रो बॉर्डर रे ये देखा जाए एटा मन रखिबो अर्जेंटीना एंड चिली हैला अर्जेंटीना एंड चिली हैला ए दीटा देशर बॉर्डर रे कोन देखा जाए दैट इज ओजोस डेल साल्डो द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो बुझिला माउंटेन हिज एंडिस कॉन्टिनेंट हिज कोन साउथ अमेरिका देखो फाइनल क्वेश्चन कौन अच्छी सीरीज रो द टेम्परेट ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका आर नोन एज द टेम्परेट ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका आर नोन एज कौन हो पारिबो तो ये आसीबो कोन ना भेल्डेस हला भेल्डेस बुझिला मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट ओके तो पिला माने ये थिला जे आपनरो किसी जोडा कि कोन व्हिच डेट वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे फॉल्स मैं पढिसंती डेट एंड डेज ऊपर दीटा क्लास जेहेतु करिसंती तो प्रथम क्वेश्चन आछि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे केबे आसीबो कोन आसीबो आंसर लिखिबो कोन दैट इज केते हिजिबो
on 24th of March, 24th of March. Next देखो, name the present PM of Japan. देखो, PM नरेंद्र मोदी जेहेतु विजिट अच्छा कौन ना जापान एंड चाइना, ओके, तो आप मन रखिए वर्तमान प्रेजेंट PM ऑफ जापान किए ही मोस्ट इंपोर्टेंट बोले है आंसर लिखिबो कोन दैट इज करेक्ट आंसर हिजिबो लिखिबा लिखिबो शिगेरु इस्बा शिगेरु शिगेरु इस्बा बुझिला तो नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज ए जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच टू कंट्री जदि हम देखिबा एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट एटा जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज को दीटा कंट्री भितर आसीबो कोन परिबो आंसर लिखिबो कोन दैट इज हिजिबो इंडिया एंड मंगोलिया इंडिया एंड मंगोलिया बुझला नेक्स्ट देखो रिसेंटली व्हिच कंट्री रिसीव्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया कौन लिखि परिबा वर्तमान को कंट्री जोटा कि आपनकर कोन होइसी ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाइसी कोठो ना भारत तो लिखिबा आंसर कोन हिजिबो दैट इज सीरिया नेक्स्ट देखो who was the coach of the Indian cricket team during the last World Cup तो लास्ट वर्ल्ड कप होता बुझला तो सही समय इंडियन क्रिकेट टीम रो हेड कोच किए थे कौन लिखिपर आंसर कौन आसो दैट इज लिख राहुल द्राविड राहुल द्राविड बुझला नेक्स्ट देखो हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज लॉयर्स डे इन ओडिशा जदि हम देखा लॉयर्स डे आसो के सॉरी लॉयर्स डे कार बार्थ एनिवर्सरी रे पालन करा जाए आंसर लिख कौन दैट इज मधुसूदन दास मधुसूदन दास इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देसी वेयर इज द सावलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड पचार वेयर इज द सावलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड तो को यूटी किंबा स्टेट रे आसीबो सावलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आंसर लिखिबा जम्मू एंड काश्मीर ये भी गोटे रिसेंटली न्यूज रे थिला जेहेतु आमे आको क्वेश्चन नै छथि हैला नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू फ्लाई टू स्पेस प्रथम भारतीय जे कि स्पेस ट्रैवल करथिले प्रथम भारतीय पचारछि नॉट फर्स्ट इंडियन वुमेन पचारछि हैला बा फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन मडे पचारनी ओके कौन लिखा आंसर आसो कौन दैट इज राकेश शर्मा राकेश शर्मा नेक्स्ट देखो रुकुणा रथ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फेस्टिवल इन ओडिशा तो रुकुणा रथ को फेस्टिवल सहित जड़ित ओडिशा रे आंसर लिखा कौन ना अशोकाष्टमी अशोका अष्टमी ओके नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय WWF वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WWF सिचुएटेड लिखि परिबा आंसर आसो कौन दैट इज ग्लैंड स्विट्जरलैंड है ग्लैंड स्विट्जरलैंड बुझला देख WWF रो फुल फॉर्म कौन हो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सॉरी फंड फॉर नेचर बुझला तो नेक्स्ट देखो where is the headquarter of WTO situated वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो
हेडक्वार्टर कोठा आसीबो कोन आसीबो तो लिखिबो एडे कोन दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड बुझिला नेक्स्ट देखो व्हिच स्टेट हैज द फेमस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बा हमें देखिबा कोठारे आपन को मिलिबो कोन दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एटा आंसर आसीबो कोन लिखिबो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट देखो नेम द फेमस पर्सन ऑफ ओडिशा हु वाज बोर्न ऑन 5th ऑफ मार्च तो 5th ऑफ मार्च रे जणी ओडिसा फेमस पर्सन को बर्थ एनिवर्सरी आसे तो तांको नेम कोन हे जिवो लिखिबो बिजू पटनायक ओके नेक्स्ट देखो which Indian state or UT legislative assembly became the first to run entirely on solar power जदि हम देखिबा को स्टेट किंबा यूटी रो लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा कि एबे रिसेंटली कोन हिची ना टोटली यार लेजिस्लेटिव असेंबली कोन ना सोलर पावर रे ही काम करिवो ओके आंसर आसीबो कोन दैट इज दिल्ली बुझिले नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि व्हिच कंट्री वन वर्ल्ड कप मेंस हॉकी इन 2023 देखो करेंट अफेयर गुडा का अपन के देखिबे हैला एटा तो अपन स्टैटिक पार्ट हे जिवो कारण जेहेतु 2 ईयर हेलानी हैला कोन आसीबो जर्मनी ओके नेक्स्ट देखो व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड ह्यूमन राइट्स डे तो ह्यूमन राइट्स डे केबे आसीबो दैट क्वेश्चन मैं पढ़ी डेट एंड डेज रो आंसर आसीबो कोन ह्यूमन राइट्स डे दैट इज लिखिबो 10th ऑफ डिसेंबर बुझले नेक्स्ट देखो व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक को इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमें कोन ना अर्थक्वेक को मेजर करि परिबा आंसर लिखिबो कोन दैट इज सेसिमोग्राफ आज आंसर आसुनी दैट इज सेसिमोग्राफ बुझला करेंट अफेयर आपण भल से देखिबे हला हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन इंडिया हां माने जदि हम देखिबे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया यार हेड के हिसबे तर आंसर आसीबो कोन दैट इज पीएम हला पीएम हेड हिसबे यूनियन काउंसिल मिनिस्टर गुडा को हला नेक्स्ट देखो हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ पाठ किए करांती बड़ा क्वेश्चन गुडा को हला आपण आराम से करि परिबे आंसर आसीबो कोन दैट इज हिजिबो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया which city is hosting the second global spiritual tourism conclave 2025 देखिबा जदि हमें सेकंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 रो होस्टिंग सिटी कोन ही जीवो ये भी रिसेंट करेंट अफेयर है देखो छाड़ी अपन गोटे हला कोन ही परिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज उज्जैन हला उज्जैन कारण आपण पासरे गोटे गोटे पेपर तो कंपलसरी आपण आसीबो हला छाबर पोर्ट इज ए सी पोर्ट लोकेटेड इन व्हिच कंट्री छाबर पोर्ट कोड आसीबो
ସାବର ପୋର୍ଟ କୋଉଟା ଆସିବ ମନେ ଅଛି? दैट इज कंट्री आसीबो एठे ईरान। ओके, वेयर इज जोजिला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? जोजिला टनल कोड आसीबो को यूटी बा स्टेट रे आसीबो कोन लिखि परिबा? जोजिला टनल दैट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? नेशनल हैंडलूम डे केबे आसीबो? ताले लिखिबो 7th ऑफ अगस्त। बुझिला? नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूतम? मेघदूतम रो ऑथर के हिजबे? आंसर हिजबो कोन? दैट इज कालिदास हला, कालिदास। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ ओडिया नोवेल याज्ञसेनी? याज्ञसेनी रो ऑथर के हिजबे? ठीक जोटा गोटे ओडिया नोवेल हिजबो। आंसर आसीबो कोन? हां, प्रतिभा राय। बुझिला? नेक्स्ट देखो, पार्ट सेकंड अछि आपनर कोन? दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। एटा हमें देखिबा ऑप्शन रु किछि आंसर बाहर करिबा। फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज डांडी मार्च? ओके, डांडी मार्च कोन आसीबो? डांडी मार्च कोड स्टार्ट हेतिला? दैट इज साबरमती आश्रम रो एटा स्टार्ट हेतिला। देखो, नेक्स्ट देछि इंश्योरेंस सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय? इंश्योरेंस सेक्टर को बॉडी एटा ऑर्गेनाइज्ड करे बा रेगुलेट करे? तो लिखिबो कोन? दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज आईआरडीए। ओके, ऑप्शन सी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which of the following depicts correct sequence in the context of preamble of the Constitution of India? जदि हम देखिबा preamble of the Constitution of India, ओके, तो एठे करेक्ट सीक्वेंस कोन हिजिबो? कोन लिखि परिबा? लेखा हिजि कोन? With the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, तापर आसीबो कोन? सोशलिस्ट, सोवेरियन सोशलिस्ट। नेक्स्ट आसीबो कोन? सेकुलर हला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन सी हेजिबो करेक्ट आंसर। बुझिला? एटा होची करेक्ट सीक्वेंस जोटा कि प्रियम्बल रे मेंशन अछि। सोवेरियन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। बुझिला? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, देछि इंडिया's first liquid mirror telescope has been commissioned in which state or UT? देखो एट चारटा ऑप्शन अछि। सी हेजिबो हिमाचल प्रदेश, आ डी हेजिबो उत्तराखंड। बुझिला? कोटा हेजिबो करेक्ट आंसर जोटा कि फास्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एठे आसीछि कोठे? आंसर आसीबो कोन? दैट इज उत्तराखंड हेजिबो करेक्ट आंसर हला, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो, इलियन सितारसी इज एसोसिएटेड विथ which dance form? बुझिला? देछि इलियानी सितारसी इज एसोसिएटेड with dance form। को डांस सहित ये जड़ित बोली पचारछि। आंसर आसीबो कोन? दैट इज लिखिबा कोन? कथकली हेजिबो करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, पचाछि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? प्रथम भारतीय जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले? एटा आंसर लिखिबो कोन? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखो, द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय हुम? ठीक अछि, तो जीएसटी काउंसिल रो हेड के हिजबे?
लिखिबो आंसर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट देखो हु हेड्स द नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हु हेड्स द नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन आसीबो एटा आसीबे पीएम हिजबो करेक्ट आंसर बुझिला। नेक्स्ट देखो जेम्स वेब इज द नेम ऑफ नासास। तो जेम्स वेब गोटे नासार कौन हिजबो चीफ ऑफ ऑपरेशन रेसिडेंट स्पेस टेलीस्कोप नन ऑफ द अबव। तो आंसर आसीबो कोन दैट इज हिजबो स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखो द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 हैज बीन नेम्ड एज। माने चंद्रयान 3 रो लैंडिंग पॉइंट को हमें कौन कहबा तार नेम कौन हिजबो लिखिबो शिव शक्ति पॉइंट। ओके जिबा नेक्स्ट पार्ट सी रो अछि कोन एक्सपांड द फॉलोइंग 10टा कहिथिला आपन को किंतु हमें एटे सबजा लिखिबा एक्सपांड करबा को हला बुझिला। तो स्टार्ट करबा फर्स्ट आसिला यूएनजीए। यूएनजी रो फुल फॉर्म कौन हिजबो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। लिखिबो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके नेक्स्ट देखो आईआरईडीए कौन अच्छी आईआरईडीए दैट इज इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके पीएमजीकेएवाई ये आसीबो कोन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिबो कोन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके नेक्स्ट डीएलएसए कौन आसीबो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सर्विसेज अथॉरिटी बुझिला। नेक्स्ट देखो एनजेडीजी कौन आसीबो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड करेक्ट। नेक्स्ट देखो एनएचएआई मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजी दैट इज नेशनल हाईवे सॉरी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया बुझिला। टीडीएस कौन हिजबो टीडीएस लिखिबा कौन दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बुझिला। नाटो कौन हिजबो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बुझिला। नेक्स्ट देखिबा जीएसटी। जीएसटी कौन आसीबो गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एंड लिखिबो होलसेल मु एमते लिखि दोछि लिखिबोनी एंड लिखिबो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर लिखिबो ला। ठीक अछि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ओके ट्रांसफर। नेक्स्ट देखो गूगल फुल फॉर्म जानि चंदी ग्लोबल ग्लोबल तापर आसीबो कोन और ऑर्गेनाइजेशन। ओके ठीक अछि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ग्रुप
language of birth. ओके नेक्स्ट देखो देखो अच्छी कौन ना पार्ट डी रे अच्छी राइट डाउन द ट्रू और फॉल्स माने ट्रू किंबा फॉल्स हम याकू मेंशन करबा ट्रू जदि ट्रू लिखिबा फॉल्स जदि फॉल्स लिखिबा आ किछि नै पचार जे कोन मर्क्यूरी इज ए सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी गोटे सैटेलाइट की यस और नो मर्क्यूरी गोटे सैटेलाइट हबनी हैला ए आसीबो कोन दैट इज फॉल्स हे जिवो मर्क्यूरी कोन हे परिबो ताले मर्क्यूरी हे परिबो दैट इज प्लैनेट ओके हां सॉरी एटा कोन लिखछि मु हां ठीक अछि हैला एटा अर्थ हे जिवो हैला नेक्स्ट देखो 12th day of January is the death anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose 12th day बा 12th January death anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose ये अछि भी कोन ये भी नो हे जिवो बा फॉल्स हे जिवो बुझला जदि करेक्ट करबा को कोन हे परिबो ना स्वामी विवेकानंद तो कोन आसीबो बर्थ एनिवर्सरी आसीबो ओके बर्थ एनिवर्सरी लिखिबा बुझिले तो बा आमे लिखिबा नेशनल यूथ डे लिखि परिबा मध्य ओके नेशनल यूथ डे लिखि परिबा नेक्स्ट देखो द बीटिंग रिट्रीट इज ए सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिव्स माने हम जब देखिबा दैट इज बीटिंग रिट्रीट हला ये गोटे होची कोन ना रिपब्लिक डे को एठे समाप्त करिया पे गोटे सेरेमनी हे जिवो ऑब्वियसली ये आसीबो कोन दैट इज ट्रू हे जिवो ओके नेक्स्ट देखो बाम्बो इज ए ग्रास इज बाम्बो इज ए ग्रास ट्रू और फॉल्स कोन लिखि परिबा ये आसीबो कोन दैट इज ट्रू हे जिवो ओके नेक्स्ट देखो श्री नवकृष्ण चौधरी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा माने नवकृष्ण चौधरी ओडिशा रा चीफ मिनिस्टर थिले बा रहि सारी छंती आंसर आसीबो कोन दैट इज ट्रू हे जिवो हैला किबा कोन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बुझले नेक्स्ट देखो डीआरडीओ देखिबा कोन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओके नेक्स्ट देखो बीएसएनएल हाँ ठीक अच्छे समस्त बीएसएनएल कौन हो पारिबो ना भारत संचार निगम लिमिटेड भारत संचार निगम लिमिटेड नेक्स्ट देखिबा आईबीआरडी हाँ ठीक अच्छे समस्त आईबीआरडी रो फुल फॉर्म कौन हो पारिबो इंटरनेशनल बैंक फॉर देखिबो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बुझिले नेक्स्ट देखो एनटीपीसी एनटीपीसी मन अच्छी पिले समस्त तो एग्जाम दौथिबो एनटीपीसी मन अच्छी कौन लिखि पाइबा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हाँ ठीक अच्छे लिखिबो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बुझिले नेक्स्ट देखो बीसीसी नॉट बीसीसीआई दैट इज बीसीसी ब्रिटिशर ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन देखिबो ब्रिटिशर्स ब्रॉडकास्टिंग ब्रिटिशर्स ब्रॉडकास्टिंग दैट इज कॉर्पोरेशन
बुझिले हाँ नेक्स्ट देख ଯିବା ସେଲ୍ ହେଲା ସେଲ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବିବିସି କରିଦିଅ ହେଲା ବିସିସି ହେଇଯାଇଛି ବିବିସି କରିଦିଅ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଲିସା ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ କଣ ଆସିବ ଏଲିସାରେ ଆସିବ କଣ ଏନଜାଇମ୍ ଲିଙ୍କଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଏସେ ଦେଖିବ କଣ ଏନଜାଇମ୍ ମନେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏନଜାଇମ୍ ଲିଙ୍କଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଣ ଆସିବ ଏସେ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଇଟିବିଆଇ ଆଇଟିବିଆଇ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଆଇଟିବିଆଇ ବି ପ୍ରିଭିୟସଲି ପଢେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର क्वेश्चन को ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ଦେଖ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ଅଛି ଦେଖ କହିଛି କଣ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍स ପଚାରିଛି ପ୍ରଥମ क्वेश्चन डेस रिवर ऑफ ओडिशा originates from गोनासिका और गुप्तगंगा हिल्स इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा तो पचारिଛି रिवर नेम आपको एटे मेंशन करिवार अछि जोटा कि गोनासिका बा आमे ताको कहबा गुप्तगंगा हिल रो ओरिजिनेट ହେଇଛି ओ डिस्ट्रिक्ट ହେଇଯିବ ना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ହେଇଯିବ मन अछि कोन हे परिबो ସେଟେ रिवर आसीबो कोन दैट इज बैतरणी ओके बैतरणी रिवर जोटा कि ओरिजिनेट फ्रॉम गोनासिका और गुप्तगंगा हिल्स इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट देखिबा this is the highest sorry this is the height of the peak देवमाली in meter ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି क्वेश्चन पिले याको आपण क्वेश्चन खाली मॉडिफाई ହେଇଛି कोन the highest peak of ओडिशा आपण लिखितांती देवमाली ହେଲା what is the height of the peak देवमाली in meter बास मैं क्वेश्चन टी मॉडिफाई करछि आ किछ नै कोन आसीबो हाइट ऑफ द देवमाली मीटर रे लिखिबो आंसर आसीबो केते दैट इज 1672 मीटर एटा आसीबो बुझिला देवमाली को माउंटेन रेंज अंडर रे आसे मन रखिबो ईस्टर्न घाट अंडर ही आसे ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज अंडर ही आसे बा यार अंतर्भुक्त ହେଇଯିବ बुझिला देखो नेक्स्ट ଯିବା कोन ଏଇଟା ଆପଣ ହେଇଯିବ 5485 ओके हिट दिड जा मन रखि परिबो हला नेक्स्ट देखो दिस इज नोन एज पल्लिकवि ऑफ ओडिशा पल्लिकवि ऑफ ओडिशा रूप रे के परिचित कौन लिखि परिबा पल्लिकवि दैट इज नंद किशोर बळ ओके नेक्स्ट देखो डे सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया डे सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स इन ओडिशा लिखिबो कोन दैट इज भुवनेश्वर इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो डेस इज द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा सबठारु लॉन्गेस्ट वाटरफॉल कोन हे जिवो भारतर सॉरी ओडिसा रो
मन अच्छी कौन अच्छी हो बरई पानी ओके कोडे आसीबो मन अच्छी बरई पानी लोकेशन को जिल्ला रे आसीबो मतलब लिखिबो इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट देखो डेस इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया आयरन लेडी रूप में किए परिचित हाँ ठीक अच्छे करेक्ट समस्त करेक्ट अच्छी आयरन लेडी रूप में किए परिचित लिखिबो कौन दैट इज इंदिरा गांधी बुझिले हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो डेस इज द प्रेजेंट भाइस चेयर पर्सन ऑफ नीति आयोग ठीक अच्छे इंदिरा गांधी इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया देखो भाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोगर वर्तमान भाइस चेयरपर्सन किए जिवे किए अच्छा बोले आम पढ़ा मन अच्छी प्रेजेंट ऑफिस होल्डर्स ये गोटे आप जोटा कि मुझे खूब शीघ्र आपको नहीं आसबि है पढ़ा आम प्रेजेंट माने एग्जाम केते दिन थी आम पढ़ा कारण डे बाय डे किसी चेंजेस हुए तो सेमती देखा सुमन बेरी ओके नेक्स्ट देख डेस इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया ऑफ ओडिशा जदि आम देखा एरिया अनुसार सबुठ बृहत्तम जिला हो कौन ओडिशार कौन आसो लिखिबो कौन दैट इज मयूरभंज मयूरभंज ओके नेक्स्ट देख पचासी डेस इज द फास्ट ओडिया डायरेक्टर ऑफ हिंदी फिल्म प्रथम ओडिया डायरेक्टर जे कि हिंदी फिल्म उपरे डायरेक्शन देइथिले कौन आसो लिखिबो कौन दैट इज प्रशांत नंद प्रशांत नंद ओके नेक्स्ट देख डेस इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मन अच्छी लिखिबो कौन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ओके वाइस प्रेसिडेंट मत गोटे जिनस मेंशन कर पिले वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट किए अछंती हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट देख हु इज द फास्ट ओडिया जज हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम ओडिया जज जी कि सीजीआई ऑफ इंडिया हाँ ठीक अच्छे वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट पदवी कौन अच्छी ना भेकेंट अच्छी ओके खाली अच्छी तार इलेक्शन वर्तमान होगा जाऊँगी मन रख जी कि गोटे आमको नुआ वाइस प्रेसिडेंट मिले बुझे तो ये आसो आंसर कौन ना रंगनाथ मिश्र लिखा जस्टिस जस्टिस रंगनाथ मिश्र ओके नेक्स्ट देख व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन हो लॉन्गेस्ट रिवर कौन आसो दैट इज नाइल रिवर आसो है नाइल रिवर नेक्स्ट देख हाँ ठीक अच्छे व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक है माने सबुठारु बृहत्तम गणतंत्र देश कोडा हो आंसर लिख दैट इज इंडिया हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख
ठीक अछि हु वाज द फास्ट टू डिस्कवर इंडिया हु वाज द फास्ट टू डिस्कवर इंडिया तो भारत को प्रथमे किए डिस्कवर करथिले 1498 ରେ ଆସିବା ଆଙ୍କେ ବୁଝିଲା ତ ଲେଖିବ କଣ ନା दैट इज भास्को ड गामा ହେଲା ଭାସ୍କୋ ड गामा नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन मैन ऑफ इंडिया रूप में किए परिचित देखो इजी क्वेश्चन आपण पेपर रे पचारिछि ହେଲା आयरन मैन ऑफ इंडिया किए लिखिबो दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट देखो व्हिच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कौन हो पारिबो बेले नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन हो नॉट नेशनल एनिमल दैट इज नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन हो लिखिबो कौन दैट इज एलिफेंट बुझिले नेक्स्ट देखो ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्रॉड पॉलिटिकल डिविजन्स अंडर द मराठास तो मराठा अंडर रे ओडिशा टोटल केतेटा प्रोविंस रे डिवाइडेड हेतिला मन अछि कोन आसीबो एटा आसीबो देखो टोटल टू प्रोविंस रे एठे डिवाइडेड हेतिला गोटे आसीबो कोन दैट इज मुगल बंदी एंड गरजात बुझिला मुगल बंदी एंड गरजात दीटा आसीबो होला लेखिबो एठे मुगल बंदी एंड गरजात ओके गरजात एरिया एंड मुगल बंदी नेक्स्ट देखो वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड गेटवे ऑफ इंडिया रो लोकेशन कोड हो मन अच्छी तर आंसर एटे आसीबो कोन दैट इज मुंबई हिजबो करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट देखिबा पचाची कोन ना व्हेयर डिड गौतम बुद्धा एटेन महापरिनिर्वाण गौतम बुद्धा कोठे महापरिनिर्वाण एटेन करथिले व्हेयर डिड गौतम बुद्धा एटेन महापरिनिर्वाण भूल होचे एनलाइटेड पॉइंट पाइथिले कोडे सी जतल कोन अचीव्ड एनलाइटमेंट हैला मन रखिबो दीटा जिंस एनलाइटमेंट सॉरी लेखिबो दीटा जिंस मन रखिबो कंफ्यूजन हबनी से जन्म ग्रहण करथिले कोडे हैला जन्म होइथिले कोडे दैट इज लुम्बिनी बुझिला लुम्बिनी एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट कोडे थिले एनलाइटमेंट हेतिले बोध गया रे हैला बुझिले तो महापरिनिर्वाण मीन्स कोन तांकर देह त्याग होइतिला कोडे दैट इज कुशीनगर लिखिबो कोन कुशीनगर उत्तर प्रदेश रे आसीबो ओके मन रहिबो तो फास्ट सेरेमनी कोड हेतिला ना सारनाथ रे एगुडा का आपण मन रखिबे सब हला हु रोट समर तरंग केली कलानिधि चतुर विनोद अंबिका विलास एगुडा का आसीबो सब कोन दैट इज नोटेबल वर्क गुडा का आसीबो तो ऑथर की हिजिबे आ सहित मु पढै छी ऑथर एंड बुक्स एंड ऑथर पढै छी आपन को काली तो हमर क्लास सरी ऑलरेडी मन अछि के लिखि छथि बहुत फेमस फेमस ऑथर लिखिबो कोन आंसर हिजिबो ब्रजनाथ बड़जेना ब्रजनाथ बड़जेना ओके नेक्स्ट देखो हिस्ट्री पॉलिटी एंड लिटरेचर देखिबा कोन अछि आवर क्वेश्चन अंडर whose लीडरशिप वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट बाय द ब्रिटिश द बैटल ऑफ प्लासी मन अछि समस्तंकर
तो पचाची अंडर हुज लीडरशिप वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट बाय द ब्रिटिश। क्वेश्चन बुझी पारछन तो माने बैटल ऑफ प्लासी आसला केबे 1757 रे आसला। ओके तो काहा अंडर रे ब्रिटिश माने बैटल ऑफ प्लासी लढी थिले बोली पचारछि। एटा मन रखिबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे आसीबो कोन दैट इज रॉबर्ट क्लिव। ओके रॉबर्ट क्लिव। नेक्स्ट देख हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोगर प्रेजेंट हाँ ठीक अछि। नीति आयोगर प्रेजेंट चेयरमैन किए जिवे आमे चेयरमैन रूप रे काहाकू कहबा नीति आयोगर चेयरमैन काहाकू कहबा एटा मन रखिबो पीएम ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट देख हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। माने जदि हम देखिबा 1857 रो सिपाही विद्रोह हला तो बिहार रो किए लीड करथले बुझिला बा बिहार रो किए नेतृत्व नेथिले मन अछि। देखो ये होची एक्सेप्शनल केस गुडा आपण जोडा एग्जाम रे पछारे हला बिहार रो किए हेतिले झांसी रो किए नेथिले बुझिला दिल्ली रो किए नेथिले ओके सेटा मन रखिबो कुनवर सिंह। ओके कुनवर सिंह। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द ड्रामा नील दर्पण। नील दर्पण ड्रामा रो ऑथर किए हिजिबे पढ़ी आम गोटे थर भी माने प्राय आम 30टा पेपर चेक कले 30 रु गोटे दुटा पेपर में पढ़े नील दर्पण ऑथर किए लिखिब कौन दीन बंधु मित्रा। ओके नेक्स्ट देख हु फाउंडेड प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज फाउंडर किए आम पढ़ी पढ़ी आपन को जोटा कि कौन मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री आम किसी समाज गुड़ाक विषय पढ़ी आंसर आसो कौन दैट इज आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ओके ओके ठीक नेक्स्ट देख फ्रॉम हाँ कोड फाउंडेशन होता ना मुंबई रे यार फाउंडेशन होता। नेक्स्ट देख फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जदि हम देखिबा डीपीएसपी को स्टेट को कंट्री रो गोटे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन रु याकू बोरो करा जायछि को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु लिखिबो दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हला नॉट यूके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा दैट इज आयरलैंड। ओके नेक्स्ट देखो व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे इज इन इंडिया सेलिब्रेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे आसीबो भारत रे डायरेक्ट क्वेश्चन एडा मन रहि जिवो लिखिबो कोन दैट इज 26th ऑफ नवंबर बुझिले। नेक्स्ट देखो हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोगर जोटा कि आसे कौन ना गवर्निंग काउंसिल मीटिंग आसे तो यार चेयरपर्सन किए बा या को प्रतिनिधित्व किए करती लिखिबा कौन ना पीएम ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख हु इज द ऑथर ऑफ मथुरा मंगल कौन हो पारिबो वर्तमान आपनर क्वेश्चन अछि कौन मथुरा मंगलर लेखक किए जिवे आमे पढ़ी एगुड़ाक सब काली पढ़ी है बुक्स एंड ऑथर गुड़ाक आंसर कौन आसीबो मथुरा मंगल दैट इज भक्त चरण दास। भक्त चरण दास। नेक्स्ट देख इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकम ए सेपरेट स्टेट। को ईयर रे ओडिशा गोटे कौन करा जायछि ना सेपरेट स्टेट रो मान्यता दिया गला इज क्वेश्चन 1st ऑफ अप्रैल दैट इज 1936 रे आसीबो। ओके करेक्ट नेक्स्ट देख राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स।
किछि बुक्स अछि आमे से गुडांकर ऑथरଙ୍କ नेम लिखिबा जेमिति आसीबे लाजवंती लाजवंती रो राइटर किए हिजिबे ना राजिंदर सिंह बेदी देखिबो राजिंदर सिंह बेदी ओके नेक्स्ट देखो मुद्र राक्षस रो लेखक किए हिजिबे मन अछि ते लिखिबो कोन दैट इज विशाखा दत्त बुझिले नेक्स्ट देखो अभिज्ञान शकुंतलम यार राइटर किए हिजिबे एगुड़ाक माने रिपिटेशन आपणकर आसे है अभिज्ञान शकुंतलम हो विशाखा दत्तर मुद्र राक्षस हो ओके दैट इज कालिदास है कौन लिख कालिदास नेक्स्ट देख गोदान गोदान अथर किए बहुत फेमस अथर मुंशी प्रेमचंद देख मुंशी प्रेमचंद बुझे ठीक अच्छे देवी चंद्राणी चौधराणी हाँ लेखक किए आसबे बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी ओके नेक्स्ट देख विंग्स ऑफ फायर विंग्स ऑफ फायर लेखक किए आसबे एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम हाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ओके नेक्स्ट देख दास कैपिटल यार लेखक किए आसबे देख गुड़ाए क्वेश्चन अच्छी से जिते स्पीड आप आंसर देवे आगू जावा या किए लिखिं ना कार्ल मार्क ओके ठीक अच्छे देवदास देवदास अथर किए जी कौन लिखा ना लिखा शरत चंद्र सॉरी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बुझे नेक्स्ट देख बाबाजी यार लेखक किए आसबे लिख कौन ना जगन मोहन लाला नेक्स्ट देख क्या खोया क्या पाया मोस्ट फेमस पोएट आम कहीपर क्या खोया क्या पाया आंसर आसो कौन अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी ओके जीवा नेक्स्ट बेले कौन अच्छी देख आसला कौन कैपिटल्स एंड करेन्सी कंट्री देसी बास आम तार कैपिटल एंड करेन्सी ये मेंशन करवा फास्ट आसो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया फास्ट कैपिटल लिख करेन्सी लिख सिक्वेन्स अनुसार लिख कौन आसो ऑस्ट्रेलिया कौन आसो ऑस्ट्रेलिया लिख कौन ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया आसो कौन वियना एंड यूरो हिजबार करेन्सी बुझला सेमती जापान जापान कौन आसो तो जापान लिख कौन दैट इज टोकियो यन बांग्लादेश कौन हम ढाका करेन्सी हम टाका ओके नेक्स्ट बेल्जियम कौन आसो ब्रुसेल्स यूरो हाँ ब्रुसेल्स दैट इज करेन्सी जीव यूरो बुझला नेक्स्ट देख ईरान ईरान कौन आसो तेहरान दैट इज रियल हिजबार करेन्सी तेहरान रियल हिजबार करेन्सी बुझला तो नेक्स्ट देख इटाली इटाली कौन आसो रोम
दैट इज कैपिटल यूरो हिजबार करेंसी सेमती फ्रांस फ्रांस कौन लिखि परिबा फ्रांस आसीबो पेरिस यूरो हिजबार करेंसी नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम आसीबो लंडन आसीबो कोन कैपिटल पाउंड स्टर्लिंग आसीबार कोन करेंसी पाउंड स्टर्लिंग सिंगापुर आसीबो कोन कैपिटल बा सिंगापुर सिटी को हमें कहबा कैपिटल बुझिला डॉलर हिजबार कोन करेंसी सिंगापुर डॉलर लिखिबो ला बुझिला नेक्स्ट देखो यूनाइटेड अरब्स बा यूएई कौन लिखा को यूएई रो लिखा आबुधाबी ओके यूएई दिराम हिजबार कौन जोटा कि करेन्सी हो बुझला तो नेक्स्ट देख इंपोर्टाट डेज उपर देखा आम जमी नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नेशनल यूथ डे केबे आसो केवल ऑप्शन ही मेंशन करा फुल लिखा दरकार नहीं नेशनल यूथ डे दैट इज 12th मार्च आसो सेमती वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन आसो 5th ऑफ जून आसो है नेक्स्ट देखा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योगा डे केबे आसो दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दैट इज 21st ऑफ जून रे आसो ठीक अच्छे कारगिल विजय दिवस ठीक अच्छे कारगिल विजय दिवस ये आसो 26th ऑफ जुलाई ओके करेक्ट 26th ऑफ जुलाई नेक्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे केबे आसो देखिबो कोन दैट इज 10th ऑफ डिसेंबर नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल वुमेन्स डे केबे आसो ये आसो 8th मार्च रे आसो हला वर्ल्ड एड्स डे केबे आसो हाँ ठीक अच्छे हाँ 8th मार्च ठीक अच्छे है समस्त वर्ल्ड एड्स डे दैट इज 1st ऑफ डिसेंबर बुझे नेशनल लीगल सर्विस डे केबे आसो बा नेशनल लीगल सर्विस डे केबे को डेट रे याकू सेलिब्रेटेड बा ऑब्जर्व करा जाए मन अच्छी लीगल सर्विस डे आंसर लिखिबो कोन दैट इज 9th ऑफ नवेम्बर 9th नवेम्बर हमें पढ़ी देइछंती इंपोर्टेंट डेट्स एंड डे गुडाक जो माने देखि नांती क्लास करि परिबे वर्ल्ड टूरिज्म डे केबे आसीबो कौन लिखिपर लिख कौन 27th ऑफ सेप्टेम्बर बुझला नेक्स्ट देख राष्ट्रीय एकता दिवस केबे आसीबो कौन लिखा देख राष्ट्रीय एकता दिवस आसीबो केबे दैट इज 31st ऑफ अक्टोबर 31st ऑफ अक्टोबर नेक्स्ट देख इंटरनेशनल वुमेन्स डे बारंबार क्वेश्चन आसूची रिपीटेशन अनुसार कौन लिखिपर इंटरनेशनल वुमेन्स डे लिख 8th ऑफ मार्च ठीक अच्छे नेक्स्ट देख इंडियन आर्मी डे केबे आसीबो करेक्ट लिखा 15th ऑफ जनवरी 15th ऑफ जनवरी ठीक अच्छे नेक्स्ट देख
ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଏବ୍ରିଭିଏସନ୍। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବ୍ରିଭିଏସନ୍ CISF। CISF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଲେଖିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ବୁଝିଲେ? करेक्ट। नेक्स्ट देखो नाबार्ड। नाबार्ड आम पढ़ी बारंबार कौन हो पार? ठीक अच्छे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिखा ये कौन? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक अच्छे बुझे। नेक्स्ट देख आईटी बीपी यार फुल फॉर्म कौन हो पार? देखिए गोटे कौन दैट इज इंडो तिब्बतियान बॉर्डर पुलिस। बुझे इंडो तिब्बतियान बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट देख पीसी FSSAI या कौन लिखा? देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया बुझला? ओके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लिखा आप मोर भाया लिखोनी। नेक्स्ट देख सेबी। सेबी का आम लिखिपर सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बुझला? ठीक अच्छे समस्त है जी। नेक्स्ट सिक्यूरिटीज लिख IES। नेक्स्ट देख फिल इन द ब्लैंक्स पढ़िया क्वेश्चन गुड़ाक। द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज। अर्थ रो सरफेस को आम पढ़ा है कहवा स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट नोन एज कौन लिखिपर? लिख कौन दैट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख द अर्थ इज टाइटल्ड अबाउट डेस डिग्री फ्रॉम लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्लिप्टिक प्लेन। तो से पचास कौन टोटल अर्थ केते डिग्री कौन इनक्लाइंड है जोटा कि एक्लिप्टिक प्लेन को जब देखा देखिए 23.5 डिग्री होम लिखिपर 23 ऑफ हाफ डिग्री हो। ओके नेक्स्ट देख दिस इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ ओडिशा। इजी क्वेश्चन है कारण आज पेपर जमी आसाला सेमती अच्छे बाकी किसी मोर मोडिफाए है लिखा कौन दैट इज मयूरभंज। मयूरभंज हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख डेस इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्तमान डीजी किए अच्छा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रो कौन लिखिपर? प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिख मृत्युंजय महापात्र। कौन लिख? मृत्युंजय महापात्र बुझला? नेक्स्ट देख नेम ऑफ द फर्स्ट ओडिया फिल्म इज। प्रथम ओडिया फिल्म कौन हो? नेम ऑफ द फर्स्ट ओडिया फिल्म कौन लिखा? दैट इज सीता विवाह। सीता विवाह बुझला? ठीक अच्छे करेक्ट जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अच्छे देखिए डिस्कसन करवा। देख देखिए कौन खंडधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा।
खंडधार वाटरफॉल ओडिशार को जिल्ला रे यार लोकेशन आसीबो कौन लिखिबा खंडधार वाटरफॉल कौन हो पारिबो केउंझर और सुंदरगढ़ कौन लिखिबा खंडधार वाटरफॉल लिखिबो कौन दैट इज सुंदरगढ़ हो करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखो व्हिच इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा रो राजधानी कौन हो जिवो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा दैट इज अगरतला हो करेक्ट आंसर करेक्ट अगरतला नेक्स्ट देखो गहिरमथा इज वेल नोन एज मास नेस्टिंग साइट ऑफ व्हिच स्पेसीज हाँ ठीक अच्छे गहिरमथा इज वेल नोन एज मास नेस्टिंग साइट ऑफ व्हिच स्पेसीज कौन लिखिपर लिखिब कौन ऑलिव रिडल टर्टल्स कौन लिखिबा ऑलिव रिडल टर्टल्स ओके ठीक अच्छे ऑलिव रिडल सॉरी ऑलिव रिडले टर्टल्स लिखिब पूरा तार नेम मेंशन करिवो हला कारण एटा पर्टिकुलरली मिले तो सेही अनुसार मेंशन करबा नेक्स्ट बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोडा आसीबो ये रिवर कौन आसीबो हला ये आसीबो गोदावरी रिवर रो गोटे ट्रिब्यूटरी आसीबो हला ठीक अछि गोदावरी रिवर रो ट्रिब्यूटरी गोटे आसीबो दैट इज सिलेरु रिवर लिखिबा कोन सिलेरु रिवर नेक्स्ट देखो प्लैनेट अर्थ इज इन व्हिच गैलेक्सी तो प्लैनेट अर्थ को गैलेक्सी रो गोटे पार्ट हे जिवो कोन लिखिबा मिल्की वे हे जिवो करेक्ट आंसर बुझला नेक्स्ट देखो ठीक अछि समझ नेक्स्ट देखो व्हिच टेंपल ऑफ ओडिशा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाँ ठीक अछि आंसर आसीबो कोन दैट इज कोणार्क सन टेंपल केबे आस्तला बिले कोणार्क सन टेंपल केबे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो मान्यता पाइला इयर केबे हे जीवन मन अछि आ कोणार्क सन टेंपल गॉट द टैग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इयर केबे हबो 1984 हला 1984 मार्क करिवो एग्जाम रे इयर भी पचारि पारे नेक्स्ट देखो जालियानवाला बाग मकर टुक प्लेस इन व्हिच इयर तो जालियानवाला बाग इंसिडेंट केबे आसीबो मन अछि 13th एप्रिल दैट इज 1919 रे आसीबो हला पूरा डेट सहित लिखिबो हाँ ठीक अछि नेक्स्ट देखो हु एस्टाब्लिश्ड उत्कल टेनेरी कौन हो पारिबो सी रो आंसर कौन हो जिवो कौन लिखिबा तो लिखिबो कौन दैट इज मधुसूदन दास मधुसूदन दास ओके नेक्स्ट देखो ओके मधुसूदन दास ठीक अछि नेक्स्ट देखो नेम द फास्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न नेम द फास्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न आंसर आसीबो कोन दैट इज खान
अब्दुल हाँ अब्दुल गफर खान बुझला जहाँ को आम कहवा कौन दैट इज फ्रंटियर गांधी बोली कहवा 1987 आपको मिलता कौन दैट इज कौन भारत रत्न मिलता बुझले तो नेक्स्ट देख व्हिच पोएट ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड एज स्वभाव कवि व्हिच पोएट ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड एज स्वभाव कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर है करेक्ट गंगाधर मेहर नेक्स्ट दिबा देख व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ ड्राई आइस रो केमिकल सिंबल कौन है ताको आमे कहि परिबा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 बुझला तो नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कोड हेतिला प्लेस रो नेम कहबा एठे हां लिखिबो एठे कोन दैट इज पोखरान हला पोखरान स्टेट हेजिबो राजस्थान कहा समय रे दिला ना से समय पीएम थिले इंदिरा गांधी बुझला इंदिरा गांधी थिले को ईयर रे थिला ना मे 18 दैट इज 1974 ये हेतिला ओके यार कोड नेम कौन थिला कोड नेम कौन थिला मन अछि स्माइलिंग बुद्धा बुझला स्माइलिंग बुद्धा हेतिला यार कोड नेम बुझि पारछन तो दैट्स नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन रो इन्वेंटर किए कौन लिखि परिबा हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन लिखिबो कोन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नेक्स्ट देखो व्हिच प्लेटू इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड ओ प्लेटू का हमें कहबा रूफ ऑफ द वर्ल्ड मन अछि रूफ ऑफ द वर्ल्ड देखो ए लिखिबो कोन दैट इज तिब्बतियन प्लेटू बुझिला तिब्बतियन प्लेटू ठीक अछि करेक्ट नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन हो पारिबो मन अछि देखिबा कोन ना सत्य नाडेला ओके जीवा नेक्स्ट देखो 7 नंबर आसीबो कोन पानाम कैनाल कनेक्ट्स विथ टू ओशंस जदि हम देखिबा पानाम कैनाल कथा तो ये को दीटा ओशन को कनेक्टेड करे बोली पचारछि कौन लिखिबा मन अछि देखो नाइन रेड सी हबन पानाम कैनाल आसीबो कोन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन देखिबो कोन दैट इज अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन ओके नेक्स्ट देखो हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा वर्तमान प्राइम मिनिस्टर किए अछंती कनाडा रो जस्ट करेंट अफेयर गुडा कहला एडा कौन आसीबो ही इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा
तो लिखिबो कोन दैट इज हां ठीक अछि एथलेटिक क्वेश्चन एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन हिचो ये ठीक अछि आपनकर कनाडा वर्तमान पीएम हिचबे कार्ने मार्क कार्ने ओके नेक्स्ट देखो हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हां ठीक अछि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हु इज द करंट एक्सटर्नल ईएम कोन आसीबे एस जयशंकर बुझिला तो नेक्स्ट देखो G20 समिट 2023 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी और जोटा रिसेंटली G20 समिट हेतिला 2023 रे तब को सिटी रे ये हेतिला ठीक अछि करेक्ट ना नहीं न्यू दिल्ली रे हेतिला हला माने मेन होस्टिंग सिटी हेछि म न्यू दिल्ली हला तापर आपण जहा लिखिबे कल्चरल अछि हला एगुडा को अलग अलग अछि बुझिला नेक्स्ट देखो अलास्का इज इन व्हिच कंट्री अलास्का ओ कंट्री रे ये आसीबो कोन लिखि परिबा तो लिखिबोटे कोन दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज यूएस रे आसीबो अलास्का ओके साउथ अमेरिका ठीक अछि जिबा नेक्स्ट देखो हाँ ठीक अछि देखो आंसर ऑल द क्वेश्चंस कहि चाउथरे जेमिति कहिछि व्हिच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 तो वर्तमान जोटा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हेतिला तो मेडल टैली रे टॉप कंट्री कोड आसीबो टॉप कंट्री कोन आसीबो हला जस्ट करंट अफेयर गुडा को आपण बारंबार कहिछि करंट अफेयर देखिबे आंसर आसीबो कोन दैट इज चाइना हिजबो करेक्ट आंसर हला ठीक अछि नेक्स्ट देखो दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स जदि हम देखिबा दीपिका कुमारी को कथा तो ये को खेल सहित जड़ित हो जिवे कोन लिखि परिबा दीपिका कुमारी आंसर आसीबो कोन दैट इज आर्चरी हिजबो करेक्ट आंसर हला आर्चरी नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल कर्णम मालेश्वरी ओके कर्णम दैट इज मालेश्वरी ओ खेल सहित जड़ित मन अछि वेट लिफ्टिंग बा वेट लिफ्टर हिजिबे हला कर्णम मालेश्वरी वेट लिफ्टिंग बुझिला वेट लिफ्टिंग को ओलंपिक हेजिबो ना 2000 ओलंपिक्स हला जोटा कि सिडनी रे आपण रहितला बुझिला तो सही समय से जितले कोन ओलंपिक मेडल को मेडल जितले मन अछि को मेडल ब्रोंज हेजिबो हला ब्रोंज मेडल एति जिंस आपण मन रखिबे जिबा नेक्स्ट कोन अछि देखो ଦେଇଛି Carol Navarrotich has been elected as the new president of which country? Carol Navarrotich, the new president of which country? That also a part of current affair. କଣ ଲେଖିବା पोलैंड ହେଇଯିବ करेक्ट आंसर ହେଲା पोलैंड नेक्स्ट देखो थॉमस कप इज ए प्रेस्टिजियस ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम्स कौन हो परिबो थॉमस कप इज ए प्रेस्टिजियस ट्रॉफी थॉमस कप इज ए प्रेस्टिजियस ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम
आंसर आसिबो कोन फुटबॉल और बैडमिंटन ओके बैडमिंटन इज करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट जीवा देखो हु ट्रांसलेटेड द महाभारत फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज टू ओडिया लैंग्वेज तो महाभारत कौन करथिले ना संस्कृत लैंग्वेज टू ओडिया लैंग्वेज को किए ट्रांसलेट करथिले कौन आसिबो आंसर लिखिबो कौन दैट इज जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास बुझिला नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स प्रथम भारतीय जे कि नोबेल प्राइज रो विजेता हिजबे हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन आसिबो एटा आसिबो आंसर कौन ना सीवी रमन कोथिपे पाइथिले ना रमन इफेक्ट बा हमें कहि परिबा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बा डिस्कवर ऑफ रमन इफेक्ट बुझला रमन इफेक्ट केबे इयर हिजबो 1930 रे पाइथिले बुझला तो जे कि हिजबे प्रथम फास्ट एशियन एंड फास्ट इंडियन ए दुईटा जिनस मन रखिबो केबे भूलिबन जेमिति हला फास्ट एशियन एंड फास्ट इंडियन नेक्स्ट देखो हम्पी टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हम्पी टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया कौन लिखिबा मन अछि दैट इज लिखिबो कोन कर्नाटक हिजबो करेक्ट आंसर बुझला जोटा कि विजयनगर एम्पायर रो कोन विजयनगर एम्पायर रो एमपी गोटे कोन हिजबो विजयनगर एम्पायर रो कैपिटल मध्ये थिला ये हला मन रखिबो नेक्स्ट देखो हु रोड ओडिया भागवत ये मध्ये गोटे कोन दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये हिजबो हला गुडे जिंस अछि ताको मन रखिबे ओ रिवर साइड रे आसीबो तुंगभद्रा रिवर साइड रे आसीबो हला ओडिया भागवत के लिखिथिले ना सारला दास ओके नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रेजेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा के हिजबे देखिबो खांबापाती हरि बाबू खांबापति हरि बाबू हरीश टंडन होचनी कोन वर्तमान चीफ जस्टिस बोधे शायद हला गवर्नर कथा हम पचारे यदि कौच क्वेश्चन भल से पढ़ हु इज द प्रेजेंट कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स हु इज द प्रेजेंट कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स जोटा कि वर्तमान एबे रिसेंटली अपॉइंटेड होती 29th नंबर ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ना ना आगे सी ए जी अलग सी जी ए अलग है कंफर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अलग कंट्रोल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अलग है तो 29th किए ही वर्तमान रिसेंट अपॉइंटमेंट है लिखा एम एस सी ए कल्याणी बुझला नेक्स्ट देखो हाउ मेनी मेंबर्स आर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा having special knowledge or practical experience in subject like art literature science and social service कौन हो पारिबो टोटल एटा आसीबे 12 मेंबर्स हला
नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनुमेरेट्स अबाउट राइट टू एजुकेशन बा को आर्टिकल रे राइट टू एजुकेशन विषय रे मेंशन अछि बा सेति जिंस आपन पचार छै विषय देखिबो कोन दैट इज आर्टिकल 21 ए आसीबो हला नेक्स्ट हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इसरो रो वर्तमान डायरेक्टर के हिसबे मन अछि भि नारायण बुझला भि नारायण नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ सांसद टीवी सॉरी संसद टीवी वर्तमान संसद टीवी रो सीईओ किए हिजबे ये भी रिसेंटली जुलाई मंथ रे आपनर बोधे अपॉइंटमेंट हला देखिबो कोन दैट इज उत्पल कुमार सिंह बुझला इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल इनकम बुझला ना नहीं ए भितर को ऑर्गेनाइजेशन बा को संस्था बा को इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करे कोन हे परिबो नेशनल इनकम कोन हे जिवो एटा मन रखिबो दैट इज ये आसीबो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हला जोटा कि प्रीवियसली एनओएसओ से कौन करथिला प्रिपरेशन करथिला किंतु याकू मर्ज करा जायछि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सहित बुझिला जदि आपन पचारे बेले मिनिस्ट्री कोन आसीबो एटा आसीबो कोन ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुझिला मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग सॉरी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हला मन रखिबो मिनिस्ट्री इंपोर्टेंट हिजबो कारण एग्जाम रे मिनिस्ट्री भी आपन पचारि पारे बुझिला तो नेक्स्ट देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट्स जदि हम देखिबा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को स्टेट देकी पास हुए नै बोली आपन पचारछि कोन लिखिबा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट्स तेरे आंसर लिखिबो कोन ओडिशा इज करेक्ट आंसर देखो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि आपन पचारछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मते कहइबो टोटल गुजरात हला गुजरात राजस्थान नेक्स्ट आसीबो कोन मध्य प्रदेश शॉर्ट रो लिखि दोछि नेक्स्ट आसीबो छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बेंगल त्रिपुरा एंड मिजोराम बुझला एई स्टेट गुडा को देगिरी कोन करे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टेट्स मन रखिबो जो जहा देगिरी कोन हुए ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस हुए नेक्स्ट देखो फाथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर तो फाथोमीटर रो वर्क कोन हिजो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाथोमीटर earthquakes rainfall ocean depth or sound intensity कोन लिखि परिबा देखो आंसर आसीबो कोन दैट इज ओशन डेप्थ हिजबो फाथोमीटर रो मेन यूजेस नेक्स्ट देखो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज आयरन रो सबठारो प्योर फॉर्म कोन हिजबो आयरन रो प्योर फॉर्म कोन हे परिबो एटा आंसर लिखिबो कोन ना रफ्ट आयरन हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज तो वॉशिंग मशीन भीतर को प्रिंसिपल रे काम करे सेंट्रीफ्यूगेशन और डायलिसिस रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन
कौन लिखिपर आंसर आसो कौन ना सेंट्रीफ्यूगेशन हो करेक्ट आंसर मन रख सेंट्रीफ्यूगेशन नेक्स्ट देख पचार व्हिच रिवर इज कॉल्ड बृहद गंगा आम कहीपर ओल्ड गंगा आपको कहुए कौन आसो जोटा कि सेकेंड लार्जेस्ट रिभर भारतर आंसर लिख कौन दैट इज गोदावरी करेक्ट आंसर जोटा कि आम लिखिपर कौन द सेकेंड लार्जेस्ट रिभर ऑफ इंडिया ओके यार ओरिजिन कौट ओरिजिन मन अच्छी त्रयंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र मन रख त्रयंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट बुझला नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ये जिन मन रख नेक्स्ट देख हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो हाइड्रोजन बम को प्रिंसिपल रे काम करे हाइड्रोजन बम पे कौन आसीबो दैट इज प्रिंसिपल कौन आसीबो आंसर लिखिबो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन हिजबो करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन बी फ्यूजन हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट देख पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंडियन आइलैंड्स कोटा को कहा जाए इंडियन आइलैंड्स कौन लिखिपर ए एंड बी होला इंडोनेशिया नहीं ए एंड बी होला ओके ए एंड बी लिखिबो अंडमान निकोबर एंड लाक्षाद्वीप है दैट इज अंडमान एंड निकोबर कोठे आसो आपंकर बे ऑफ बेंगल आसो अंडमान देखिए दैट इज बे ऑफ बेंगल आसो बुझे लाक्षाद्वीप कोट आसो आरबियन सी आसो ये दुटा जिन मन रख मोस्ट इंपोर्टाट पॉइंट हो नेक्स्ट देख हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी कथा देखा यार चेयरमैन किए जी हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखिपर आंसर लिख कौन दैट इज बी आर अम्बेडकर यार हेड बा चेयरमैन बुझला देख जदि हम देखा ड्राफ्टिंग कमिटी कथा ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आसीबो मन अच्छी अगस्ट 29 1947 आसो कौन ड्राफ्टिंग कमिटी है बा या फॉर्मेशन करागला जी नेक्स्ट देख देती विश्वनाथ टेम्पल बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट विश्वनाथ टेम्पल कौन हो पार आंसर आसो दैट इज उत्तर प्रदेश वाराणसी रे यार लोकेशन आसो ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट मन रख कौन हो पार ना ये हूँ 18th सेंचुरी टेम्पल 18th सेंचुरी ये टेम्पल आसो मोस्ट ऑफ या बिल्ट किए करते बिल्ट किए करते मन अच्छी महारानी अहल्या बाई होलकर मन रख महारानी अहल्या बाई होलकर ओके जो कि डायनेस्टी कौन हो ना होलकर डायनेस्टी रू ये बिलोंग करती नेक्स्ट देख देती
Write the answers. Who is considered real founder of Jainism? Who is considered real founder of Jainism? ମନେ ଅଛି real founder of Jainism କିଏ ହେଇଯିବେ? ଏଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କଣ? that is ऋषभ नाथ। ବୁଝିଲା? ऋषभ नाथ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥାଙ୍କର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇରାର ବା 24th ତୀର୍ଥାଙ୍କର କିଏ ହେଇଯିବେ ନା ମହାବୀର ଜୈନ। ମହାବୀର ଜୈନ। ଓକେ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। क्वेश्चन कौन पचार आंसर कौन हो पार। नेक्स्ट देख व्हाट इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। व्हाट इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। मन अच्छे ओल्डेस्ट कौन हो पार। देखिए गोटे बृहद अरण्य है बृहद रण्यक देखिए बृहद अरण्यक है मन रख जोटा कि सबुठ ओल्डेस्ट उपनिषद विषय ये आसो है 7th ରୁ 6th सेंचुरी जोटा कि कंपोज होता। नेक्स्ट देख इन हाउ मेनी सेक्ट्स बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड एंड व्हाट आर दे। इन हाउ मेनी सेक्ट्स बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड एंड व्हाट आर दे। कहीपर कौन हो पार। देख फास्ट ऑफ तो दीटा थिला किंतु ताको जतल करागला तो 3 सेक्ट्स रे आको डिवाइडेड करागला हला। कौन कौन हो पार त्रैवद महायान एंड वज्रयान हला। फास्ट ऑफ तो दीटा थिला जोटा कि कौन आपण हिनायन एंड महायान तापर आसला कौन त्रिवेद महायान एंड वज्रयान लिखिबो त्रिवेद महायान एंड दैट इज वज्रयान। बुझिल तो नेक्स्ट देख द लेंथ ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर इज हाईएस्ट इन व्हिच स्टेट। द लेंथ ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर इज हाईएस्ट इन व्हिच स्टेट। सबुठार अधिक कोठ आसीबो यार लेंथ कारण सुवर्णरेखा रिवर देख टोटाल लेंथ आम जब देखा 395 किलोमीटर हम जोटा कि आप्रोक्सीमेटली ही नवा आम है एक्जाक्ट लेंथ नहीं पारानी कौन रिभर आम तो बुझला। हाईएस्ट फ्लो होती कौटे ना झारखंड यार हाईएस्ट फ्लो आसो है। नेक्स्ट देख व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिमेशन प्लेस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। क्रिमेशन प्लेस कौन हो लाल बहादुर शास्त्री देख सुवर्णरेखा कौट ओरिजिन कौट होइए ओबियसली सी आसो कौन झारखंड आसो रांची डिस्ट्रिक्ट रू आसो है लिख विजय घाट हो करेक्ट आंसर विजय घाट। बुझला नेक्स्ट देख हु रोड द बुक इंडिया डिवाइडेड बुक रो ऑथर किए हिजबे। इजी क्वेश्चंस आंसर आसो कौन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके नेक्स्ट देख व्हाट इज द ओडिशा रैंक बाय पॉपुलेशन इन इंडिया। व्हाट इज ओडिशा रैंक बाय पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक अच्छे केते आसबो पॉपुलेशन वाइज जदि हम देखिया ओडिसा प्लेस केते हिजबो ऑल इंडिया रैंक केते हिजबो। मन अच्छी तो आंसर आसबो कोन दैट इज 11th लार्जेस्ट हिजबो हला 11th लार्जेस्ट हिजबो। हां आ गोटे जिनस आप मन रखिबे कोन थर्ड लार्जेस्ट मन आसबो जदि आप लिखिबे थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब हिजबो किछ दरकार नै आपण एठी मन रखिबे 11th लार्जेस्ट हिजबो
जोटा कि टोटल 4.1 बा 41 मिलियन एटा आपनर पॉपुलेशन आसीबो बुझिला तो नेक्स्ट देखो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ संगीत नाटक एकेडमी लोकेटेड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ संगीत नाटक एकेडमी लोकेटेड कौन हो परिबो एटा आंसर आसीबो कोन दैट इज न्यू दिल्ली हिजबो करेक्ट आंसर हला न्यू दिल्ली नेक्स्ट देखो which district of odisha is the main source of tin ore in odisha तीन ओर ପାଇଁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବ ମାଲକାନଗିରି ବୁଝିଲେ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି with indian state recently reintroduced the critically endangered asian giant tortoise into a community reserve that is a current affair question ହେଲା ଆକୁ ଭଲସେ କରିବ କଣ ଲେଖିପାରିବା which Indian state recently reintroduced the critically endangered Asian giant tortoise into a community reserve? The answer ଆସିବ କଣ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏମିତି ପେପର ବନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସେ ଉପରେ ଦେଖିଯିବ କାରଣ 2025 ର ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ହିଁ ନେମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ the largest waterfall of the world कौन आसीबो लेखिबो कौन दैट इज एंजल फॉल्स बुझिले कोडे आसीबो ना भेनिनजुला रे यार लोकेशन आसीबो विक्टोरिया नहीं एंजल फॉल्स बा विक्टोरिया फॉल्स कौन आसीबो लार्जेस्ट पचार्स बुझिले बुझिले दीटा मन रखिबो गोटो होची कोन सॉरी 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 हां दीटा अछि एटा कोन एटा पचारछि गोटे लार्जेस्ट पचारछि गोटे हाईएस्ट पचारछि हला दीटा अछि हाईएस्ट गोटे अछि लार्जेस्ट अछि विथ अनुसार जदि हम देखिबा विक्टोरिया आसीबो हला बाकी हम जदि हाईएस्ट देखिबा तो आसीबो कोन दैट इज भेनिनजुला रे एंजेला फॉल्स आसीबो हला दीटा जिंस मन रखिबो द लार्जेस्ट ओशन कोन हिजिबो हला भास्ट जदि हम देखिबा भास्ट जदि तार विड्थ अनुसार देखिबा तो आसीबो कोन विक्टोरिया फॉल्स आसी परिबो हला पैसिफिक पैसिफिक ओशन ठीक अछि नेक्स्ट जोग्राफिकली लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जोग्राफिकली लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन आसीबो राजस्थान इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट कौन आसीबो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस कोडे दैट इज आंध्र प्रदेश इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लास्ट वाइसरॉय किए हिजिबे लिखिबो कोन लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड लुइस माउंटबेटन करेक्ट नेक्स्ट देखो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच स्टेट रे आसीबो ये कौन लिखि परिबा चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंसर आसीबो कोन ना केरल हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय whom द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय whom
हाँ मुझे जानी भगत सिंह लिखियो समस्ते है से दिन क्वेश्चन आपको सेमती देछि है करेक्ट आंसर दरकार मते एटा से दिन मु मार्क करछि देखो फास्ट कॉइन्ड बाय होम माने इनकलाब जिंदाबाद फास्ट की यूज करथिले बा ई इनकलाब जिंदाबाद र वर्ड फास्ट की ओरिजिन करथिले है वाइडली आम जो जानिले भगत सिंह कौन करते कहले है माने भगत सिंह कहलु समस्त जानिले किंतु फास्ट टर्म किए देथिले तो मन रखिबो ना जने आसीबे के ना मौलाना हसरत मौलाना हसरत मोहानी है आज ये कि 1921 मसीह इनकलाब जिंदाबाद रो माने ये वर्ड टा ताके कोन करथिले फास्ट कहिथिले बा लेखिथिले बा कॉइन्ड करथिले माने उद्भावन करथिले तापरे वाइडली कोन करथिले भगत सिंह याको कहिथिले हला तो मु सेति आपन आंसर शीट रे दिख जा देती फास्ट के करथिले तापरे फॉर्मली याको प्रसार के करथिले तो दीटा जिंस आपन मन रखिबे नेक्स्ट देखो where is the headquarter of the UNA World Food Program located यूनाइटेड नेशंस रो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रो हेडक्वार्टर कोड आसीबो कोन लिखिबा आंसर आसीबो कोन दैट इज रोम इटली ओके नेक्स्ट देखो ठीक अछि which article of the Indian Constitution states the duty of every citizen तो भीतर को आर्टिकल आसीबो जोटा कि इंडियन सिटीजन मान को ड्यूटी को शो करे या पे आर्टिकल कोन हिसबो लिखिबा आर्टिकल 51A which country announced in 2025 the launch of Venera D Venus mission बुझिला भेनस पे गोटे मिशन आसीबो कोन ना भेनेरा डी मिशन बुझिला तो 2025 रे को कंट्री अनाउंस करिछि जोटा कि 2034 रो 36 भितरे भेनेरा डी मिशन कोन अब लॉन्च करा जिवो भेनस पे ये भी गोटे कोन करंट अफेयर्स रो पार्ट आंसर आसीबो कोन कोन लिख परिबा दैट इज रूसिया इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन हला ऑप्शन देइसी which city is known as the city of blood in India city of blood in India क्या आसीबो कोन तेजपुर आसीबो नेक्स्ट द फेमस गोलकोंडा पोर्ट इज लोकेटेड इन which स्टेट फेमस गोलकोंडा पोर्ट कोड आसीबो ठीक अछि तेजपुर गोलकोंडा पोर्ट आसीबो तेलंगाना रे ओके नेक्स्ट देखो which monument is known as national monument of India ठीक अछि तेलंगाना नेशनल मोनुमेंट ऑफ इंडिया कोड आइजबो ये आसीबो कोन इंडिया गेट जोटा कि न्यू दिल्ली रे यार लोकेशन अछि ओके नेक्स्ट देखो द पेट्रोन्स ट्विन टावर्स इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री पेट्रोन्स ट्विन टावर्स को कंट्री रे यार लोकेशन आसीबो पेट्रोन ट्विन्स टावर कोड आसीबो दैट इज मालेशिया रे यार लोकेशन आसीबो बुझिला नेक्स्ट देखो द फेमस एफिल टावर इज इन एफिल टावर लोकेशन कोड आसीबो को कंट्री रिलेटेड हिजिबो आंसर कोन लिखिबा पेरिस हिजिबो करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखो कुंभ मेला इज हेल्ड इन एवरी डेस इयर्स कुंभ मेला प्रति वर्ष बा केते वर्ष रे थरे हुए बोली पचार सॉरी लिखिबो 12 इयर्स हला नेक्स्ट देखो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण बा नील दर्पण रो ऑथर के हिजबे कोन लिखि परिबा सेटा आंसर आसीबो नील दर्पण रो ऑथर सेटा आंसर आसीबो दीनबंधु मित्रा ठीक अछि
नेक्स्ट देखो which among the following temples of India is known as a black pagoda? ब्लैक पगोडा कौन आसीबो? तो ब्लैक पगोडा कहबा सन टेम्पल कोणार्क याकू यूनेस्को मान्यता केबे मिलिला 1984 रे मिलिला हला एटा भी आपण एग्जाम रे पचारे नेक्स्ट देछि कुचिपुडी बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट ठीक अछि कुचिपुडी बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट लिखिबो आंध्र प्रदेश हला पढिले एबे जस्ट नेक्स्ट देखो सरस्वती सम्मान is given annually for outstanding contribution to ठीक अछि सरस्वती सम्मान को फील्ड रे दिया जाए सरस्वती सम्मान लिखिबो दैट इज लिटरेचर कैटेगरी रे दिया जाए हला ठीक अछि नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड organ donation day is observed every year on which day वर्ल्ड organ donation day केबे आसीबो आंसर आसीबो कोन 13th ऑफ अगस्त नेक्स्ट देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्रिसिएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्रिसिएशन डे केबे आसीबो केबे लिखिबो 16th ऑफ जुलाई नेक्स्ट देखो ଦେଇଛି the dash controls communication for the entire computer system कंप्यूटर सिस्टम रे एंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम को किए कंट्रोल करे लिखिबो मदरबोर्ड हिजिबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो an air bubbles in water will act like a वाटर बा एयर बबल वाटर कौन बोली काम करे कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर कौन हो पार कौन लिखा एयर बबल इन वाटर मिरर लेंस हाँ ठीक अच्छे ओबियसली कौन कनकेव ही हम लेंस और मिरर कन्वेक्स छाड़ दियो है कौन हो पार कनकेव लेंस हम है नेक्स्ट देख व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कौन लिखिपर दैट इज कौन पास्कल हो करेक्ट आंसर ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट देख पचार भितर कोटा गोटे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नुह ठीक अच्छे which of the following is not a renewable source of energy कोयल हो कोयल कोयला गोटे हो कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नुह है या आम कौन रिन्यूएबल कर फॉर्मूला ऑफ पावर पावर फॉर्मूला कौन हो लिखा कौन दैट इज वर्क बाय टाइम है बी वर्क बाय टाइम सॉरी नेक्स्ट देख ठीक अच्छे देख नेक्स्ट देखिए कौन इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रे को एनर्जी रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड हुए कौन लिखिपर दैट इज काइनेटिक एनर्जी हो करेक्ट आंसर ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट देख फास्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन द ईयर तो फास्ट वर्ल्ड वार केबे स्टार्ट होइतिला केबे हम 1914 रे 1914 रे फास्ट वर्ल्ड वार आसीबो ठीक अच्छे नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री हैज द ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग सबठारु ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग कौन आसीबो को कंट्री रा आसीबो दैट इज डेनमार्क प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया
वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर पदवी रे किए अछंती इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एटा आंसर आसीबो कोन दैट इज निर्मला सीतारमण हला बहुत बेसिक क्वेश्चन हला माने कोनोसी क्वेश्चन रो लेवल नाही जदि मैं आपण आराम रे करि करि जिवे नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम चीफ जस्टिस के जिवे कोन हे परियो एटा आंसर लिखिबो कोन दैट इज एच जे कन्या हला हरिलाल जय कुसुम सुंदस कन्या नेक्स्ट देखो पचाची who among the following is the author of the book the accidental prime minister रो बुक रो ऑथर के हिजबे कोन आसीबो आंसर who is the author of the book accidental prime minister आंसर आसीबो कोन ना संजय बारू नेक्स्ट देखो हु इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटा 2023 रो पेपर सेदी मु प्रेजेंट रो नै जाइछि आपन पे हला आंसर आसीबो कोन संजय मल्होत्रा करेक्ट नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया देखो बहुत इजी क्वेश्चन माने बहुत वेरी इजी पेपर आपन 2023 रो पचारिथिला हला कोन आसीबो आंसर आसीबो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ओके ठीक अछि नेक्स्ट देखो कोन देछि क्वेश्चन हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग रो वर्तमान सीईओ की अछंती हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग हां एई वर्ष भी इजी आसु करेक्ट बीवीआर सुब्रमण्यम हला देखो क्वेश्चन रे कोनोसी चेंजेस नाही खाली जोटा करेक्ट अछि माने जेमति सीईओ ऑफ नीति आयोग हो आमे पढिले जेमति प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हला तो सेगुडा को ही आपनकर स्ट्रैटेजी अनुसार हम चेंज करछि बाकी सब सेम नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया के इज बे आंसर इज कोन दैट इज किरण बेदी इज करेक्ट आंसर देखो इजी आसु कि कोन आसु आपण करिवे कारण बहुत कंपटीशन हलानी आमे गुडे पेपर मॉडरेट आ लेवल पळेलेनी त आज गोटे देखिबा इजी पेपर हला हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मत लागु शायद मयूरभंज हो पारे पेपर हला पेपर मेंशन नहीं मु चाहि बोले आपन पठै देबी हला मु क्लास रे अपलोड कर देबी हला आर ओरिजिनल वर्जन किछ असुविधा नहीं हला बुझला मु पीडीएफ न देगी आपन ओरिजिनल पेपर भी प्रोवाइड कर देबी हला ओके चैनल मु प्रोवाइड कर देबी आपन को ओरिजिनल पेपर आपन केमिति आस्तला हला फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अंबेडकर नेक्स्ट which Indian cricketer is known as the hitman which Indian cricketer is known as the hitman that is कौन हो ना रोहित शर्मा हो करेक्ट आंसर देखो जेहेतु हम पेपर रोड आसला हम देखिया बाध्य होबा इजी हो कि मॉडरेट हो हु रोड द बुक विंग्स ऑफ फायर ऑथर किए जिवे आंसर आसीबो कोन ना एपीजे अब्दुल कलाम ठीक अछि हु वाज द फाउंडर ऑफ फेसबुक देखो इजी क्वेश्चन है आपन चाहिले माने आखि बंद करी क्वेश्चन करि बेरे हला आंसर आसीबो कोन दैट इज मार्क जुगरबर्ग ओके नेक्स्ट देखो वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड याडो इजी क्वेश्चन किछि नाही आपन पेपर रे
आंसर आसीबो कोन आंसर आसीबो कोन पुरी हेजिबो करेक्ट आंसर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रो कैपिटल कोन हेजिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज रायपुर हेजिबो करेक्ट आंसर रायपुर बिलासपुर नहीं नेक्स्ट देखो पचाची व्हिच स्टेट्स शेयर ए बॉर्डर विथ बांग्लादेश व्हिच स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विथ बांग्लादेश दैट आंसर आसीबो कोन त्रिपुरा हेजिबो करेक्ट आंसर हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन ओडिशा ओडिशा रे टोटल केतेटा लोकसभा सीट अछि बोली पचारछि आंसर आसीबो केते 21 नेक्स्ट देखो पचारछि इन व्हिच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस हला भारत केबे स्वाधीन हल ए क्वेश्चन जदि आपन आसला आपन फुल करिक आसीबे हला व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कोन हे परिबो आंसर आसीबो कोन दिवाली हेजिबो नेक्स्ट देखो हु इज द फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारतर प्रथम पीएम किए हेजिबे तो फास्ट आपन कहिछि बहुत इजी पेपर हला आंसर आसीबो कोन ना जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट देखो व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट कोटा हेजिबो गोटे रेड प्लैनेट कोन लिखि परिबा एंड आंसर आसीबो कोन दैट इज मार्स हेजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इसरो रो फुल फॉर्म कोन हेजिबो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी ग्रेविटी किए डिस्कवर करथिले हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी कोन आसीबो न्यूटन हला करेक्ट नेक्स्ट देखो व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान जापान रो करेंसी कोन हेजिबो व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान येन हेजिबो व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता दैट आंसर आसीबो कोन दैट इज गंगा रिवर नेक्स्ट देखो पचाची हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया भारत रे टोटल केतेटा स्टेट्स अछि पचारछि ए क्वेश्चन आपन कोनोसी दिक्कत हवा दरकार नै 28 व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कोन हिजबो आंसर आसीबो कोन दैट इज गंगा रिवर हिजबो नेक्स्ट देखो हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया नेशनल एंथम किए लिखिथिले हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हाँ ठीक अछि आंसर आसीबो कोन ना रविंद्रनाथ टैगोर नेक्स्ट देखो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को लोकेटेड यूनेस्को रो हेडक्वार्टर कोड आसीबो
आंसर आसो कौन दैट इज पेरिस हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचार व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो कैपिटल कौन हो कौन हो वाशिंगटन डीसी। व्हिच मुगल एम्पायर बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल के बिल्ड करथिले बा को मुगल एम्पायर बिल्ट ताजमहल। कौन लिखि परिया आंसर आसो कौन दैट इज शाहजहां। ओके नेक्स्ट देखो देछि सॉरी पता है व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी रो ब्लड को ऑर्गन प्यूरिफाई करे। कौन लिखि परिबा आंसर आसो कौन दैट इज किडनी। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन और टेलीफोन की इन्वेंट करथिले। कौन हो परिबो आंसर आसो ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट देखो वेयर इज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड। पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया कोठारे अच्छी लोकेटेड। आंसर आसो न्यू दिल्ली। द गैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज नोन एज। द कुकिंग पे को गैस यूज हुए बोली पचार। आंसर आसो कौन दैट इज मिथेन होला। देख प्रोपेन एंड ब्यूटेन आसो एलपीजी रे हैला तो सेठा हम खाली देइछ कौन कुकिंग रे को गैस यूज हुए जदि हम देखते एलपीजी रे तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता बर्तमान एटार आंसर आसो मिथेन होला। नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। तो यूएसए को किए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार आकार में देइथिला बोली पचारे। कौन हो परिबो आंसर आसो कौन फ्रांस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ओडिशा कैपिटल कौन हो भुवनेश्वर होला। यहाँ आपन पचारे किसी माने एग्जामिनर बहुत इजी क्वेश्चन पचार अवश्य। व्हाट इज लोकेटेड ऑन ओडिशा इज लोकेटेड ऑन व्हिच कोस्ट ऑफ इंडिया। कोड हो परिबो आसो ईस्टर्न कोस्ट आसो है। नेक्स्ट देख हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिशा आज ऑफ 2023। देख मुझे कही पेपर हूँ 23 पेपर है टोटाल केते जिला हो ओडिशा रे 2023 सुधा। आंसर आसो कहते 30। नेक्स्ट देख पचार व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन ओडिशा। तो ओडिशा रे को टाइगर रिजर्व देखा जाए। कौन हो परिबो आंसर लिखिबो कौन दैट इज सिमलीपाल। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। एटा 2023 पर्यंत थिला बर्तमान माको अपडेट करछि
है सीएम ऑफ ओडिशा किए जिवे ताहेडा आसीबो कोन ना मोहन चरण माझी ओके नेक्स्ट देखो पचाची व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा कोन हिजिवो ऑब्वियसली ओडिया हिजिवो व्हिच डांस फॉर्म इज क्लासिकल एंड बिलोंग्स टू ओडिशा व्हिच डांस फॉर्म इज क्लासिकल एंड बिलोंग्स टू ओडिशा हां ठीक अछि आंसर आसीबो कोन दैट इज ओडिसी हिजिवो नेक्स्ट देखो व्हिच सिटी इज नोन एज द टेंपल सिटी ऑफ इंडिया टेंपल सिटी ऑफ इंडिया कोन हिजिवो एटा मन रखिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज भुवनेश्वर हला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन ओडिशा टोटल राज्यसभा सीट्स केते हिजिवो एटा आंसर आसीबो कोते 10 हिजिवो नेक्स्ट देखो पचाची हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर हीराकुद डैम को रिवर ऊपर आसीबो ताने आंसर आसीबो कोन दैट इज महानदी व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा आंसर आसीबो कोन संबर और डी ना इंडियन विजन कोन ही परिबो संबर ही परिबो नेक्स्ट देखो व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा कोन हिजिवो कोन लिखि परिबा ताडे आसीबो कोन इंडियन रोलर आसीबो हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री ताडे आंसर आसीबो कोन दैट इज धीरू भाई अंबानी नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी केबे हेतिला बोली पचारछि केबे हिजिवो 1984 हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इंडियन स्टेट इंडियन स्टेट कोड हबनी माउरिटिस गोटे कोन इंडियन स्टेट हबनी नेक्स्ट देखो पचाची व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज एनवायरनमेंट डे केबे आसीबो एनवायरनमेंट डे केबे आसीबो 5 ऑफ जून नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल नेपाल रो कैपिटल कोन हिजिबो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल देखो वर्तमान नेपाल रे आपण रिसेंट न्यूज़ भी जानि थिबे हला हला रिसेंट न्यूज़ कोन नेपाल रो काठमांडू हिजिबो हला वर्तमान कोन नेपाल रे जेन जेड हला जेन जेड जनरेशन रो समस्त कोन करछन प्रोटेस्ट करछन अगेंस्ट कोन ना जोटे की करप्शन एंड वर्तमान आप रिसेंट न्यूज आप देखिपारे करप्शन एंड मिस गवर्नेंस है बुझल ना करप्शन एंड मिस गवर्नमेंट को लेकर वर्तमान नेपाल कौन है ना प्रोटेस्ट चलती जोटा कि सरकार ऑलरेडी भांगी गलानी छड़ी ओके नेक्स्ट देखो व्हिच फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स कोड हो पारिबो लिखिबो कोन होली हिजबो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस कौन लिखिपर फास्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस आंसर आसो कौन दैट इज कल्पना चावल
ऋतु कार्डेलिया टेसी थॉमस कौन पारिबो नेक्स्ट देखो who was the first Indian to win individual Olympic gold medal individual Olympic gold medal रो विनर की हिसबे तो आंसर आसीबो कोन अभिनव बिंद्रा शूटिंग पे जीतिथिले who was the first woman governor of an Indian state first woman governor of an Indian state कौन आसीबो सरोजिनी नायडू तो ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हाट इज द जीडीपी मींस कोन बुझो कौन आसीबो ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट which city is called the pink city pink city का कहबा which is called the pink city कौन अछि पिंक सिटी आसीबो कोन जयपुर आसीबो नेक्स्ट देखो which Indian festival is also called the festival of harvesting festival मध्ये का कहबा एटा आसीबो कोन ना पोंगल हे जिवो गोटे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन करेंसी कोन ही परिबो रुपी हे जिवो इंडियन करेंसी ठीक अछि नेक्स्ट देखो who wrote the book discovery of India रो ऑथर के हिजबे discovery of India next देखो the slogan do or die was given by whom the slogan do or die was given by whom so the answer is that is Mahatma Gandhi next देखो who was the first woman to receive Bharat Ratna answer आसीबो मदर टेरेसा what is the busiest railway station in India सबटर busiest railway station कोन हो जिवो हावड़ा हो जिवो नेक्स्ट देखो what is the full form of ATM रो फुल फॉर्म कोन हे परिबो automated teller machine okay next देखो what is the capital of Sri Lanka what is the capital of Sri Lanka आसीबो कोन ना कोलंबो कमर्शियल कैपिटल हे जिवो श्री जयवाड़ पेनरू कोट्टी हे जिवो कोन ऑफिशियल कैपिटल हे जिवो नेक्स्ट देखो पांचटा क्वेश्चन अछि हु इज द फर्स्ट एशियन टू हेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द फर्स्ट एशियन जे कि आईसीसी रो हेड मध्ये रही सारी छंती मन अछि ना कोन होय परिबो लिखबो कोन ना जगमोहन डालमिया बुझला ठीक अछि हु इज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस रो प्रथम वुमेन के हिजबे वाइस प्रेसिडेंट पदवी रे मध्ये रही सारी छंती फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट के हिजबे मन अछि कमला हैरिस ओके व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना अर्जेंटीना रो कैपिटल कोन हिजबो ना बियोनस एड्स ओके नेक्स्ट देखो व्हिच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर published in India first newspaper published in India the answer is that is the Bengal Gazette okay next देखो who is the author of the book Midnight's Children रो author के हिजबे देखिबो कोन ना that is सलमान रशौडी टीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मान को स्वागत तो पिला माने आज हम देखिबा आ गोटे प्रीवियस पेपर ऊपर डिस्कशन करबा कालीडो हम आउ थरे थ्योरी बेस हमरो केमदी स्टार्ट करबा था थ्योरी बेस करबा हला आदि गोटे पेपर डिस्कशन करबा जोडा कि आपणकर रहिछि कोन ना डिस्ट्रिक्ट कोड एग्जामिनेशन पे इंपोर्टेंट हे जिवो ओके
तो समस्त को गुड इवनिंग है जय जगन्नाथ स्टार्ट करवा कौन रही आपंकर आज क्वेश्चंस गुड़ाक ओके तो देखो जीवा आपन गोटे पोल गोटे देती क्वेश्चंस आप समस्ते करेंगे ओके तो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स रे रैंक आसो के भारत ना 10th नंबर आसो ओके देखा देख पचार कौन राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन देख ये हूँ 2023 पुरी डिस्ट्रिक्ट आपन पेपर जोटा कि जूनियर कम क्लर्क कॉपी पेस्ट एग्जाम कॉपिस्ट आपन एग्जामिनेशन होता पुरी डिस्ट्रिक्ट 2023 पेपर है किसी चेंजेस अच्छी जमीक कि मुझे गुड़ाए चेंजेस कर बाकी आपंकर पैटर्न सेम अच्छी देख भीम कौन लिखिपर लिख कौन नमस्कार भारत इंटरफेस फॉर मनी लिख कौन भारत इंटरफेस फॉर मनी बुझला नेक्स्ट देख ए आई सॉरी आई यार फुल फॉर्म कौन हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट देख BIS कौन हो पार लिख कौन दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बुझला नेक्स्ट देख FDI कौन लिख पार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बुझल तो नेक्स्ट देख YWCA लिख कौन ना यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन बुझला ये जिनस आप मेंशन करेंगे देख जीवा गोटे आप भिजिबल हम जमी है देख पचार कौन ह्वाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल जेहेतु नेपाल आप प्रोटेस्ट चलती आप जानते जी कि कौन केपी शर्मा ओली जी कि PM थे से रिजनेसन देते प्रेसिडेंट रिजनेसन देते है देख तो चर्चार अच्छी नेपाल तो नेपाल आपको कैपिटल पचारि पारे कौन लिखे ना काठमांडू इज आवर करेक्ट आंसर बुझला बर्तमान कौन तांकर जोटा कि शासन भार आर्मी हाथ को पलैला अलरेडी है मेन रिजन कौन हो ना जोटा कि आपंकर करप्शन एंड मिस गवर्नेंस जोटा कि प्रोटेस्ट मेन उद्देश्य ता पूर्व आपंकर सोशल मीडिया बैन होता से ओके नेक्स्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्जेरिया अल्जेरिया कैपिटल कौन हो जेन जेड द्वारा कौन होता ना प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है ओके व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्जेरिया कौन हो पार मुझे पढ़ाई यहाँ एल्जीरस हो करेक्ट आंसर है एल्जीरस नेक्स्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पापा न्यू गुनिया रिसेंट न्यूज रे भी ये भी चर्चार अच्छी कारण इंडिया रो नेवी बैंड जे कि पपुआ न्यू गुनिया को विजिट कर ना पपुआ न्यू गुनिया जोटा कि 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन बुझला तो से ये न्यूज अच्छी तो लिख पोर्ट मोर्सी बाय एगुड़ाक आप जो गुड़ाक न्यूज आसती है रिसेंट न्यूज आसती तो से गुड़ाक आपंकर कैपिटल बा कंट्री गुड़ाक पचारे से अनुसार आप प्रिपेरेसन हे व्हाट इज द करेन्सी ऑफ सुरीनेम है करेन्सी ऑफ सुरीनेम न्यू प्रेसिडेंट आर कौन PM अपॉइंटेड होते रिसेंट पास्ट रे लिख सुरीनेम्स डॉलर सुरीनेम्स डॉलर बुझला
आपको लिखि परिबा SRD बुझला सब बेले इजी आसीबो बोली पिले पेपर ठीक नै हैला हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूएस रो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के हिजबे कोन लिखि परिबा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो लिखि बडे कोन दैट इज जेडी भेंसी जेडी भेंसी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचासी आंसर द फॉलोइंग्स जेमति हम लिखिबा हु बिल्ट द कोणार्क सन टेंपल हु बिल्ट द कोणार्क सन टेंपल कोन हे परिबो एगुडा का आपण रहिछि क्वेश्चन गुडा को आराम से आपण करिवे तो लिखिबा बडे कोन ना किंग नरसिम्हा देवा 1 किंग नरसिम्हा देवा 1 ओके नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच ईयर भुवनेश्वर रिप्लेस्ड कटक एज द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा कौन लिखि परिबा ईयर केबे हिजिबो ऑन व्हिच ईयर भुवनेश्वर रिप्लेस्ड कटक एज द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा देखो एटे दीटा जिंस आपन मु कंफ्यूजन दूर करबी शिफ्टिंग प्रोसेस ला शिफ्टिंग प्रोसेस आसिला 1948 रे स्टार्टिंग हला शिफ्टिंग प्रोसेस हला किंतु जदि हम देखिबा एक्चुअली जतला ये कोन हला माने भुवनेश्वर कैपिटल केबे हे गला ना अगस्त 19 1949 रे कोन हला माने कैपिटल रो मान्यता मिला काको ना भुवनेश्वर को किंतु काम स्टार्टिंग केबे हला 1948 रे ओके तो दीटा जिंस आपण मन रखिबे इंपोर्टेंट हे जिवो नेक्स्ट देखो हु रोड बंदीर आत्मकथा बंदीर आत्मकथा किए लिखिथिले बोली पचार जाबो कौन हो पारिबो बंदीर आत्मकथा हाँ 1948 लिखिबो आपण हला किछ असुविधा नै बुझिला जदि लिखिबो एक्चुअल शिफ्ट बा शिफ्टिंग स्टार्टिंग एबे हितला त आपण 1948 लिखि परिबो किबा जदि आपण से पचारि छि एक्चुअली केबे टोटली ट्रांसफर्ड हे गेला त आपण लिखिबे अगस्त 19 1949 ही परिबो हला एटा आपण 1948 लिखिले चलिबो किछ असुविधा नै हला बंदीर आत्मकथा लिखिबे कि ना गोपबंधु दास कारण शिफ्टिंग स्टार्ट है माने कोन ऑलरेडी रिप्लेस हो गेलानी हला भुवनेश्वर को हैंडओवर हो गेलानी ऑलरेडी हला नेक्स्ट देखो हु इज द इन्वेंटर ऑफ जेरॉक्स मशीन तो जेरॉक्स मशीन रो इन्वेंटर के हिजबे कोन लिखि परिबा तो लिखिबो कोन दैट इज चेस्टर कार्लसन चेस्टर कार्लसन सॉरी कार्लसन ओके नेक्स्ट देखो माउंट एल्ब्रस that was recently seen in news is located in which country एगुडा कहू से रिसेंट करंट अफेयर ताको हमें कहबा स्टैटिक पोर्शन हला माने गोटे जेकोनोसी जिंस न्यूज रे आसिला से स्टैटिक पोर्शन रे आसे हला जेमति माउंट एल्ब्रस हला वर्तमान न्यूज रे चर्चा रे थिला तो एटा को कंट्री रे यार लोकेशन आसीबो आंसर लिखिबो कोन दैट इज रूसिया इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 देछि आंसर द फॉलोइंग हला पचाची हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट इजी क्वेश्चन हला हमें पढिछन एगुडा को सब कोन हे परिबो हां लिखिबो जस्टिस वीर किशोर राय बुझिला नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज के जिवे कोन लिखि परिबा हां लिखिबो एटा कोन जस्टिस एम फातिमा विवी ओके नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ रॉ वर्तमान रॉ रो प्रेजेंट सेक्रेटरी के जिवे
बा हेड बोली आम कहवा कौन लिखिपर ये भी गोटे अपॉइंटमेंट न्यूज है रिसेंट अपॉइंटमेंट आंसर आसो कौन दैट इज पराग जैन है मुझे बारंबार ने कारण बहुत गुड़ाए एग्जाम र विषय पचारे हु इज द फास्ट ओडिया टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु इज द फास्ट ओडिया टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन लिखिपर आंसर आसो कौन दैट इज जस्टिस रंगनाथ मिश्र बुझल नेक्स्ट देख व्हेन वाज ओडिशा हाईकोर्ट एस्टाब्लिश्ड ओडिशा हाईकोर्ट केबे एस्टाब्लिशमेंट हेइतिला बा ओडिशा हाईकोर्ट रो स्थापन केबे हेइतिला तो लिखिबो कोन मु पढैछि 26th ऑफ जुलाई 1948 रे आसीबो ओडिशा हाईकोर्ट ओके देखो पचासी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस किछि अछि जेमिति कि आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 रे कोन आसीबो ना सुप्रीम कोर्ट पई बा सुप्रीम कोर्ट कोन करे रिट्स जारी करे हला रिट्स जारी करे टोटल केते रिट्स हे जिवो 5 रिट्स जारी करे तो ये को पार्ट रे आसीबो मन रखिबो पार्ट 3 रे आसीबो दैट इज सॉरी हां पार्ट 3 रे आसीबो फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसीबो ओके नेक्स्ट देखो द आइडिया ऑफ concurrent list has been taken from which nation's constitution concurrent list आसीबो को constitution गोटे पार्ट हेजिबो बा को कंट्री रो constitution गोटे पार्ट हेजिबो नहीं भूल अछि आइरिश होची डीपीएसपी हला डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो आसीबो दैट इज आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन ये आसीबो कोन ऑस्ट्रेलिया ओके नेक्स्ट देखो इन व्हिच शेड्यूल डिटेल्स द पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत मेंशन्ड पचाची को शेड्यूल आपण पाइबे पंचायत बा पंचायत को शेड्यूल रे मेंशन्ड अछि पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत मेंशन्ड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिबो कोन दैट इज 11th शेड्यूल ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल बा शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि हम देखिबा टोटल केतेटा शेड्यूल लैंग्वेज अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे को शेड्यूल रे आसीबो ना 8th शेड्यूल रे आसीबो दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज आसीबो हला टोटल एटा आसीबो केते ना 22 टा शेड्यूल्ड लैंग्वेज अछि भारतर संविधान रे नेक्स्ट देखो राइट टू लाइफ इज एनश्राइन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ को आर्टिकल रे मेंशन अछि भारत संविधान रे कौन लिखिबा तो लिखिबा कोन दैट इज आर्टिकल 21 इज करेक्ट आंसर ओके देखो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अछि हमर कोन दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम कौन लिखिबा स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऊपर किछ अछि नाही कौन हो पारिबो भलसे मन पको आंसर आसीबो कोन दैट इज क्रिकेट इज करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखो देब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट कॉमनली वर्तमान ये भी दैट इज न्यूज रे थिला हला देब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट पचार छला नॉट डिस्ट्रिक्ट को स्टेट रे आसीबो
स्टेट आंसर आसीबो कोन दैट इज ओडिशा इज करेक्ट आंसर हैला मन रखिबो कारण देवरिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्तमान न्यूज रे चर्चा रे थिला हैला जोटा कि टाइगर रिजर्व बोली ताको कोन करागला घोषणा करागला तो एटा आपण मन रखिबे नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर ए गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर ए गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आंसर आसीबो कोन दैट इज नीरज चोपड़ा ओके नेक्स्ट देखो क्लासिकल डांस बिहू बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट बिहू को स्टेट रो बा को राज्य रो गोटे लोक नृत्य हे जिवो आंसर लिखिबा कोन हे जिवो आसाम नेक्स्ट देखो क्लासिकल डांस भारतनाट्यम बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट भारतनाट्यम गोटे होची कोन क्लासिकल डांस भीतर आसीबो ये को राज्य रो बा को राज्य रो गोटे कोन क्लासिकल डांस हे जिवो तमिलनाडु ओके नेक्स्ट देखो जिबा देखो क्वेश्चन नंबर 7 रे देछि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा कौन लिखबा NaHCO3 ହେଲା बुझिला नेक्स्ट देखो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस कौन लिखबा मन अछि D द्वारा हम कोन करबा डिनोटेड करबा ओके नेक्स्ट देखो व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक रो इंटेंसिटी माप करबा पई को यंत्र रो आवश्यकता रहिछि का व्यवहार हुए देखिबा कोन बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो ब्लू बार्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री ब्लू बार्ड गोटे कम्युनिकेशन सैटेलाइट आसीबो एटा को देश डेवलप करछि बा को कोन करछि बनैछि बोली आपन पचारछि क्वेश्चन रे कोन लिखिबा यूनाइटेड स्टेट्स ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अप्रूव्ड malaria treatment drug for newborn and young children पचारछि पृथ्वीर प्रथम malaria treatment drug हला कहा पे आसीबो जो माने भी नुआ बा न्यूबॉर्न बेबी होंतु किंबा यंग चिल्ड्रन होंतु हला तो सेमान पे आसीबो फर्स्ट अप्रूव्ड malaria treatment drug ओके तार नेम कोन हिजबो जोटा कि स्वीडन वर्तमान रिसेंट पास्ट रे कोन करछि बनेइथिला तो ताको कोन करा हिछि ना अप्रूव्ड मिलिछि हला तो लिखिबो कोन दैट इज कोटम सी ओ सॉरी लिखिबो भल से हला कारण एग्जाम रे आपन ये भी पचारि पारे कोटम हला COARTEM हला कोटम नेक्स्ट देखो देछि हु ऑथर दास कैपिटल रो ऑथर के हिजबे कोन लिखिबा हु इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल हां लिखिबा एटा कोन ना कार्ल मार्क्स ओके नेक्स्ट देखो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड प्राइमरली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन जदि हम देखबा नाइट ब्लाइंडनेस को विटामिन अभाव रे हुए बोली पचारछि एटा आंसर लिखिबो कोन दैट इज विटामिन ए हिजबो करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखो हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कोस्टल ठीक अछि माने पचारछि टोटल कोस्टल लाइन रे हम जब देखिबा टोटल केतेटा स्टेट
कोस्टल लाइन रे आसीबो कौन लिखा 9 स्टेट्स आसीबो ला 9 स्टेट्स ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हिच इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिटरी ऑनर हाईएस्ट मिलिटरी ऑनर कोन आसीबो भारतर कोन लिखि परिबा लिखिबो एटा कोन ना परम वीर चक्र नहीं मिलिटरी ऑनर पचार नॉट द सिविलियन सिविलियन रे आपण भारत रत्न लिखि परिबे हैला नेक्स्ट देखो व्हिच कंट्री रिसेंटली कंफर्म्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट विल उचिया मिराबिल्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोटे ऑनर आसीबो जोटा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गोटे दिया जाइसी जोटा कि हबो कोन ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल उचिया मिराबिल्स एटा को देशर सबुठारु हाईएस्ट ऑनर आसीबो मन रखिबो नामीबिया ओके नेक्स्ट देखो द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज राज्य सरकार लीगल एडवाइजर को आम कौन कह कौन लिखिपर मन अच्छी लिख कौन दैट इज एडवोकेट जनरल है हाँ ठीक अच्छे एडवोकेट जनरल नेक्स्ट देखो हु रोड बुक बाय गॉड्स डिक्री हु रोड द बुक बाय गॉड्स डिक्री कौन हो पार आंसर आसो कपिल देव नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज being constructed in Jammu and Kashmir? What is the name of world's highest railway bridge being constructed in Jammu and Kashmir? कौन लिखा लिखा कौन दैट इज चेन्नाब ब्रिज आसला ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया आंसर लिखा कौन दैट इज बांग्लादेश 4096 पॉइंट समथिंग कौन एटा आसो कौन जोटा कि बाउंड्री यार आसो शेयर करछि भारत सहित द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी जार एरिया हो कौन 32 स्क्वायर किलोमीटर आसो कार ना लाक्षाद्वीप बुझे नेक्स्ट देख हु हैज द पावर टू समन और प्रोपिग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा समन और प्रोपिग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा क्या हाथ पावर अच्छी आसो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट देख इन व्हिच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस सॉल्ट सत्याग्रह को ईयर रे हितला बोली पचार कौन लिखा लिखा सल्ट सत्याग्रह के आसो 1930 आसो सल्ट सत्याग्रह 1942 आसो कौन भारत छाड़ आंदोलन है क्वाइट इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट देख हु रोड द बुक एनहिलेशन ऑफ केस्ट बुक आसो एनहिलेशन ऑफ केस्ट यार ऑथर किए आंसर आसो डॉक्टर बी आर अंबेडकर नेक्स्ट देख द गैस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज इलेक्ट्रिक बल्ब रे को प्रकार गैस आसो
आंसर आसीबो कोन दैट इज आर्गन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडा आइजिबो जोटा कि 1969 रे ऑपरेशन हला बा आसिला 1969 रे लेखिबो कोन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्टेट कौन आसीबो महाराष्ट्र आसीबो। ओके नेक्स्ट देखो द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एनवेलप ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम व्हिच स्क्रिप्ट। सत्यमेव जयते कोन कराइछि ना जोटा कि को उपनिषद रु आसीछि बोली पचारछि आपण बास एति जिंस मुंडका उपनिषद। ओके नेक्स्ट देखो व्हिच इज नोन एज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट डैम कौन हो भारतर कौन लिखा लिखो कौन दैट इज तेहिरी डैम जोटा कि भागीरथी रिवर ऊपर आसीबो। ओके वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यार लोकेशन कोड आसीबो। कौन लिखा दैट इज लंडन यूनाइटेड किंगडम। ओके नेक्स्ट देखो डप्पू डांस इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। तो डप्पू डांस आसीबो गोटे लोक नृत्य को राज्य सहित ये जड़ित। डप्पू डांस कौन हो पारिबो आसीबो कोन आंध्र प्रदेश। ओके नेक्स्ट देखो हु इज द गार्डियन ऑफ गवर्नमेंट मनी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज द गार्डियन ऑफ द गवर्नमेंट मनी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखिबा कोन ना CAG दैट इज कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हला मन रखिबो इंपोर्टेंट हेजिबो। एफआईआर रो फुल फॉर्म कोन हेजिबो लिखिबो फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखो मु गोटे थर ही कहबी फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जते स्पीड आपण आंसर दबो भलो कारण गुडाए क्वेश्चंस अछि हला बहुत गुडाए क्वेश्चंस अछि। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखिबो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुझला ठीक अछि। नेक्स्ट देखो CJM कौन लिखि परिबा भारत सॉरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखिबो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट देखो जीवा BSNL BSNL कौन लिखिबा भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड लिमिटेड। नेक्स्ट देखो जीवा देखो 10 खंडे आसीबो 10टा खंडे आसीबो कि 12टा खंडे आसीबो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बुझले। नेक्स्ट देखो ठीक अछि PIL आपण जानि छथि जहाँ विरोध में कौन करवा गोटे लिखा तो ये PIL जारी करा जाए तो PIL कौन हो ना पब्लिक नॉट नो 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 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिख पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बुझला। नेक्स्ट देखो यूनिसेफ यूनिसेफ रे कौन लिखा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड लिख यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल
इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स फंड चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड है इमरजेंसी फंड है नेक्स्ट देख नालसा नालसा आप समस्त जानते गोटे आसो अथॉरिटी आसो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ओके नेक्स्ट देख इसरो इसरो समस्त जानते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बुझले नेक्स्ट देख एनएचआरसी कौन लिखा नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन बुझला नेक्स्ट देख एड्स एड्स कौन लिखा एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्यूट इम्यूनो देख पिले पेपर बहुत बढ़िया अच्छी आगु को हमें देखा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपण अच्छी वन लिनियर अच्छी है आसो कौन जमीक कि डेस अच्छी है बढ़िया क्वेश्चन अच्छी आज पेपर मत साटिस्फाई लगे भी देख एनडीपीएस कौन लिखा नेशनल सॉरी नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस देख नुआ जिन पढ़ा मिलूँ नार्कोटिक ड्रग्स एंड दैट इज साइकोट्रॉपिक साइको केमती लिखा SYCHOTROPIC कौन हो साइकोट्रॉपिक दैट इज सब्सटेंसेस नेक्स्ट देख आईपीसी कौन आसो इंडियन पेनल कोड है जोटा कि बर्तमान कौन हो रिप्लेस करा जाइए नेक्स्ट देख HUDCO कौन लिखा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बुझला नेक्स्ट देख जीएसटी जीएसटी कौन लिखा दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बुझला मन रख मोस्ट इंपोर्टेंट देख नेक्स्ट देख इंपोर्टेंट डेट्स आपण मोस्ट इंपोर्टेंट कारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे बहुत गुड़ाए जिनस कौन इंपोर्टेंट डेट्स उपरू बहुत क्वेश्चन से पचारे देख इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे केबे आसीबो 11th ऑफ अक्टोबर बुझले नेक्स्ट देख वर्ल्ड मलेरिया डे इंटरनेशनल पीछे पचार नॉट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से क्वेश्चन भलसे पढ़ो बारंबार कही क्वेश्चन स्ट्रेस दब कौन कही क्वेश्चन नेक्स्ट देख कौन दे पार इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मन रहा तो नेक्स्ट देख वर्ल्ड मलेरिया डे केबे आसबो ना 25th ऑफ एप्रिल बुझला नेक्स्ट देख टूरिज्म डे वर्ल्ड टूरिज्म डे केबे आसीबो वर्तमान रिसेंटली आपनकर वर्ल्ड टूरिज्म डे आसबाक जाउची दैट इज 27th ऑफ सेप्टेम्बर बुझला देख नेक्स्ट जीवा देख लॉयर्स डे स्पेशली मु ओडिसा पे कहूँ यहाँ जो मैंने भी लिखो ओडिशा रे मेंशन करिवो ओडिशा लॉयर्स डे केबे पालन करा जाए कौन लिखा ओडिशा लॉयर्स डे नो 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 ओडिशा लॉयर्स डे 28th ऑफ एप्रिल नेक्स्ट देख नेशनल लीगल सर्विस डे नेशनल लीगल सर्विस डे केबे आसीबो ताको एठे मेंशन करिवो 9th ऑफ नवेम्बर बुझला 9th ऑफ नवेम्बर आसीबो जीवा नेक्स्ट देख बिले
ଦେଖ ତମେ ପଚାରୁଛି କଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଡେ କେବେ ଆସିବ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଅଛି ଯିବା ପର୍ସନାଲିଟିज ତ ଏଠି ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ 1 କିମ୍ବା 2 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କଣ ନା ଜଷ୍ଟିସ ଫତିମା ବିବି ହେଲା ଜଷ୍ଟିସ ଫତିମା ବିବି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିବେ ଯେମିତି କି ଜଷ୍ଟିସ ଫତିମା ବିବି କିଏ ହେଇଯିବେ ତ ଲେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଜର୍ଜ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଜର୍ଜ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଏସସି ଲେଖିବନି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେ ଜଣେ ଆସିବେ ଫ୍ରିଡମ फाइटर ହେଲା ଫ୍ରିଡମ फाइटर अल्सो जदि हम लिखा 1939 रे फॉरवर्ड ब्लॉक कौन करते हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक कौन करते एस्टाब्लिशमेंट करते बुझला दीटा जिन लिख जड़े फ्रीडम फाइटर एंड 1931 रे 39 रे फॉरवर्ड ब्लॉक गोटे से संगठन स्टार्ट करते बुझला आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन प्रेसिडेंटशिप थे कारण 1939 रे से कौन जो रिजाइन देले आईएनसी रु बा इंडियन नेशनल कांग्रेस रु तापर से जाकि फॉरवर्ड ब्लॉक तैयारी कले 1939 रे देख नेल्सन मांडेला फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका करेक्ट तो बुझला आम कौन लिखिपर आ कौन लिखिपर जड़े एंटी एपार्थीहेड लीडर लिखिपर है हाँ दिल्ली चलो स्लोगान हो गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम है ये भी लिखिपर कौन असुविधा नहीं सुभाष चंद्र बोस को सपक्ष देख केबुल केबे थिले 1994 रु 1999 पर्यंत से कौन थिले ना प्रेसिडेंट थिले नेल्सन मांडेला साउथ अफ्रीका रो नेक्स्ट देखो जस्टिस एस मुरलीधर किए हिजिबे से जने कौन हिजिबे ना फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट ओके नेक्स्ट देखो नंदिनी शतपथी जानी आपन किए नंदिनी शतपथी कमेंट बॉक्स रे आसीबा दरकार हु इज नंदिनी शतपथी फास्ट फीमेल सीएम ऑफ ओडिशा देखिबो फास्ट फीमेल सीएम ऑफ ओडिशा फर्स्ट स्टेट ऑफ ओडिशा बुझिले नेक्स्ट देखो कुंतला कुमारी सावत जने किए हिजिबे बा आंकर पर्सनालिटीज कोन आसीबो फास्ट वुमेन सीएम ऑफ ओडिशा ठीक अछि समस्तंगर तो लिखिबो जने ओडिया पोएट आसीबे एंड फिजिशियन मध्य आसीबे बुझिला ए दीटा जिंस लिखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट आपन पे एग्जाम पे जिबा नेक्स्ट देखो पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जमीती कि आपन पचारला कोन नोबेल प्राइज विनर्स को नेम देई चेडे बा तांकर किसी ना देइसी आपन लिखिबे से को क्षेत्र रे नोबेल प्राइज पाइथिले हला मन रखिबो कोन लिखिबो ना एठे नोबेल प्राइज जो माने जीति चंती विजेता को ना देइची आपन लिखिबे से को क्षेत्र रे पाइथिले नोबेल प्राइज जमीती कि हरगोविंद खुराना को क्षेत्र रे पाइथिले हाँ ए फेमस राइटर ऑफ ओडिशा द टाइटल उत्कल भारती ओके तो मन रखिबो मेडिसिन सहित ये जड़ित होई जिवे केबे पाइथिले 1968 रे कोन पाइथिले ना नोबेल प्राइज पाइथिले बस एती जिंस लिखिबा एडे इयर किसी इंपोर्टेंट नहीं किंतु एग्जाम पे आपन पे इंपोर्टेंट कारण डेट आपन पछारी पाए सीवी रमन कोथि पे पाइथिले फिजिक्स पे पाइथिले सीवी रमन पाइले फिजिक्स पे केबे ना 1930 मसिया से पाइथिले मदर टेरेसा आसीबे मदर टेरेसा कोथि पे आसीबे पीस पे शांति पे हैला केबे आसीबो 1979 रे पाइले कोन पीस पे मदर टेरेसा दैट इज नोबेल प्राइज नेक्स्ट देखो अमर्त्य सेन
अमर्त्य सेन को कथा हम देखिबा सी पाइबे इकोनॉमिक्स रे। ओके केबे पाइबे 1998 रे। हाँ ठीक अछि। नेक्स्ट कैलाश सत्यार्थी जोटा कि से रिसेंटली पाइछंती नोबेल प्राइज को क्षेत्र में ना पीस शांति पाई पाइछंती। केबे पाइछंती ना 2014 रे से नोबेल प्राइज पाइछंती हैला। एती जिंस आपण मन रहिला ईयर सहित को क्षेत्र में पाइछंती आ किए पाइछंती क्लियर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वन लिनियर स्टार्ट अबाउट हैला। बढ़िया क्वेश्चंस अछि इजी अछि मॉडरेट अछि हैला लेवल क्वेश्चन भी अछि सब चेष्टा करिवे आंसर दबा पे। प्रथम क्वेश्चन अछि कोन हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा रा प्रेजेंट गवर्नर के हिजिबे वर्तमान गवर्नर पदवी रे ओडिशा रा की अछंती कोन लिखिबा देखो इजी क्वेश्चन से गुडा को लिखिबो कोन ना डॉक्टर खंबापति हरि बाबू डॉक्टर खंबापति हरि बाबू हैला बुझले। नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट पदवी रे किए अछंती भारतर बा भारतर वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट किए जिवे कोन लिखिबा तो लिखिबा कोन ना सीपी राधाकृष्णन आज तांकर कोन शपथ पाठ होला जति हम लिखिबा कोन ना सीपी राधाकृष्णन एक मार्क आपण जेते मार्क रे पडुची पडू आपण मन रखिबे एटा अपकमिंग एग्जामिनेशन रे आपण को पचारिबो हला केते नंबर हे जिवो ना 15th हे जिवे कोन वाइस प्रेसिडेंट बुझिला 14th थिले वर्तमान बे 15th हे गेले। ओके नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बा एक्चुअली पीरियोडिक टेबल रो इन्वेंशन किए करथिले कोन लिखि परबा मन अछि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बा एक्चुअली पीरियोडिक टेबल रो इन्वेंशन किए करथिले लिखिबो मेंडलीव नाइ नाइ मु तो सेहि दिन कॉल नै छी आपण पचारली पीरियोडिक टेबल रो इन्वेंशन के करथिले एक्चुअली पीरियोडिक टेबल रो हला मेंडलीव हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो रायगड़ा इज डिवाइडेड फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा देखो मु कहि छी रायगड़ा जिल्ला रो कोन पेपर ये सेहि में आपण मन रखिबे रायगड़ा जिल्ला ओ जिल्ला रो विच्छिन्न होइकरी तयारी हेछि कोन आसीबो लिखिबा कोन दैट इज कोरापुट हेछि करेक्ट आंसर हला बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन अगस्त 2025 वर्तमान अगस्त 2025 रे कोन हेछि ना वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंटेड दिया जाइछि तो तांको नेम कोन हेजिबो बा तांको नाम कोन हेजिबो देखो करेंट अफेयर क्वेश्चन हला मु कहि छी आपन करेंट अफेयर आपनकर आसुछि बारंबार देखिबे करेंट अफेयर्स हला कोन लिखिबा मन अछि तो लिखिबो कोन दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ओके नेक्स्ट देखो हु वॉन द पेन पेंटर प्राइज 2025 पेन पेंटर प्राइज 2025 रो विजेता किए हिजिबे कोन लिखिबा लिखिबा कोन दैट इज हिजिबो लीला अब्युलेला हला लीला अब्युलेला देखो नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रेजेंट लॉ मिनिस्ट्री ऑफ ओडिशा की हिजबे बा कहा हाथ रे वर्तमान लॉ मिनिस्टर अछि तो लिखिबो पृथ्वीराज हरिचंदन पृथ्वीराज हरिचंदन
ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे है जी नेक्स्ट नेक्स्ट देख पचार कौन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया's फर्स्ट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया's फर्स्ट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स तो लिखिबो कौन दैट इज आरएमएल हॉस्पिटल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है न्यू दिल्ली नेक्स्ट देख वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक हेल्ड जोटा कि 2025 रे हिची हला रिसेंटली हिची तो एटा कोड हिची बा नीरज चोपड़ा क्लासिक प्रथम एडिशन कोठारे अनुष्ठित हो सारी जो थे कि फास्ट पोजिशन रे नीरज चोपड़ा ही आसुंती हला जैवलिन थ्रो इवेंट गोटे हिजबो ये तो लिखिबो कोन दैट इज बेंगलुरु नेक्स्ट देखो इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर हैज बीन इंस्टॉल्ड तो कंट्री रो प्रथम अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर कोठारे लगा जाइछि बोली पचार छै आपन तो एटा भी आसीबो कोन ना दैट इज मालेश्वरम बेंगलुरु रे यार लोकेशन आसीबो हला नेक्स्ट देखो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा गोटे बही आसीबो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा यार लेखक के ही जिवे मन अछि बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखिबो बंडारू दत्तारिय हला बंडारू दत्तारिय ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंड करेंसी ऑफ इजिप्ट इजिप्ट रो कैपिटल एंड करेंसी कोन हो जिवो देखो गुडे क्वेश्चंस इजी अछि हला कोन से आपण रिग्रेट करिवेन जे नाही क्वेश्चंस लेवल बढ़ी छी हला कारण इजी क्वेश्चन मु नै छी कारण आपण जदि लेवल क्वेश्चन टैकल करि पाउ नाही तो एग्जाम आपण प्रिपरेशन न हबाडा ही भलो हला डायरेक्ट कथा मोर एडा लाउ किछ नाही एडा आंसर लिखिबो कोन दैट इज कायरो इजिबो कैपिटल करेंसी कोन हिचबो ना इजिप्टियन पाउंड इजिप्टियन पाउंड हिचबो हला हम क्वेश्चन टैकल कल ही आपण एति पढितली आगु को बढ़ी पारिबे हला बा क्वेश्चन जते लेवल आसले भी आपन को टैकल करिया पई इजी हबो नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज ओ दीटा देश भितर आसीबो एक्सरसाइज सूर्य किरण वर्तमान 18th एडिशन मते सरी छी कोन लिखिबा दीटा देश आसीबो डे इंडिया एंड नेपाल बस नेक्स्ट देखो व्हिच गैस इज यूज्ड सूर्य किरण बेले व्हिच गैस इज यूज्ड टू फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब रे को प्रकार गैस आसीबो तो लिखिबो दैट इज एर्गन हिजबो करेक्ट आंसर व्हिच इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस रो मुख्य उत्पादन कोन हिजबो ठीक अछि कोन लिखिबा मिथेन आसीबो कोन आर करेक्ट आंसर हला मिथेन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन सॉरी नहीं हला इन व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट फॉर्म्ड तो लिम्फोसाइट ह्यूमन बॉडी रो को ऑर्गन रे फॉर्मेशन हुए तो लिखिबो बोन मेरो ओके नेक्स्ट देखो who has been awarded the Nobel Peace Prize for the year 2024 2024 रो नोबेल पीस प्राइज काहकु दिया जाइछि कोन लिखिबा तो लिखिबो कोन दैट इज नरगेस मोहम्मदी ओके नेक्स्ट देखो भाक्रा नंगल डैम ऑन व्हिच रिवर जदि हम देखिबा भाक्रा नंगल डैम तो ये को रिवर ऊपर आसीबो बा को नदी ऊपर भाक्रा नंगल डैम आसीबो सतलेज लिखिबो करेक्ट आंसर हला सतलेज नेक्स्ट देखो दीपा करमकार रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट दीपा करमकार को खेल सहित जड़ित अछन कोन लिखिबा
तो लिखिबो कोन दैट इज जिम्नास्टिक्स हला हां सेम नेक्स्ट देखो वेयर इज पुलिकेट लेक लोकेटेड पुलिकेट लेक को राज्य सहित जड़ित हबो बा पुलिकेट लेक को राज्य रे आसीबो आंसर लिखिबो कोन दैट इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश हिजिबो करेक्ट आंसर ठीक अछि वेयर इज द पांटागोनियन डेजर्ट लोकेटेड को कॉन्टिनेंट रासिबो आपनरो पांटागोनियन डेजर्ट कोन लिखिबा कोन अछि तो लिखिबो दैट इज हिजिबो साउथ अमेरिका ओके नेक्स्ट देखो an instrument to detect the purity of milk is तो क्षीरर शुद्धता मापिबा पई ओ यंत्रर आवश्यकता रहिछि तो लिखिबो लैक्टोमीटर हला लैक्टोमीटर इज करेक्ट जो माने भी आंसर दउजंती व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओडिशा देखो ये क्वेश्चन से आपन को कोनोसी परेशान करबोनी हला बा दिक्कत करबोनी हला जेमती लिखिबो कोन दैट इज देवमाली हला एते क्वेश्चंस पढिले हम कहि इजी क्वेश्चंस भी अछि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर कोन हिजिबो भारतर लिखिबो कोन दैट इज गंगा रिवर 25 किलोमीटर हला कोन रहिजिबो तो 2525 किलोमीटर रहिजिवार लेंथ नेक्स्ट देखो सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा रो को जिल्ला रे अवस्थित लिखिबो कोन दैट इज मयूरभंज हला मयूरभंज हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो देखिवा एडिशनल जनरल नॉलेज बाकी क्वेश्चंस अछि आपनर सेक्शंस एफ रे हला जेमिति देइछि who wrote अर्थशास्त्र one of the most important works on the economy and statecraft देखो पहले क्वेश्चंस कोन कहिछि ना अर्थशास्त्र के लिखितले आपन को एग्जामिनर एमिति न पचारे कि पचारि पारे अर्थशास्त्र लेखा जाय कहा द्वारा चाणक्य बा कौटिल्य बा विष्णुगुप्त द्वारा तो सेथिरे कोन मेंशन अछि ना इकोनॉमी एंड स्टेट क्राफ्ट कथा मेंशन अछि हला तो लिखिबो चाणक्य हिजिबो सठिक उत्तर which is the longest ocean in the world longest ocean कोन आसीबो longest हो highest हो जहां भी लिखिबो हमें कोन लिखिबा that is specific question हला नेक्स्ट देखो who appoints the chief election commissioner of india chief election commissioner of india को की अपॉइंट करंती बा who appointed the chief election commissioner of india जेहेतु गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आंसर आसीबो कोन दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हला नेक्स्ट देखो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हरिप्रसाद चौरसिया ओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सहित जड़ित बांसुरी बांसुरी बा हमें लिखिबा फ्लूट फ्लूट लिखले हबो बांसुरी लिखले भी चलिबो हला बांसुरी नेक्स्ट देखो नेम द बर्थ प्लेस ऑफ उत्कलमणि गोपबंधु दास उत्कलमणि गोपबंधु दास नो जन्म जगार ना आपण लिखिबे जन्म प्लेस हला बा बर्थ प्लेस कहि छेट हला सुआंडो ठीक अछि हला कोड आसीबो ये पुरी जिल्ला रे आसीबो नेक्स्ट देखो नेम टू बुक्स हला दीटा बही लिखिबो कहारो ना फकीर मोहन सेनापति जेमती 6 माण 8 गुंठा हे गला रेवती हे जिवो आ दीटा ना आपण कहि परिबे मु तो कहि देली दीटा 6 माण 8 गुंठा आ रेवती आ कोन हे परिबो मामू लक्ष्मा हां ठीक अछि तापर देखो राइट द बर्थ ईयर एंड बर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडित नीलकंठ दास को बर्थ ईयर लिखिबो ला ईयर लिखो वर्तमान ईयर कथा पचाछि 1884 रे आसीबे पंडित नीलकंठ दास हला कोठे आसीबे ये भी आसीबे पुरी जिल्ला रे नेक्स्ट देखो ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट प्रथम
भारतीय महिला जे कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करथिले कोन लिखिबा बैचेंद्री पाल हला लिखिबो कोन दैट इज बैचेंद्री पाल लिखिबो तो नेक्स्ट देखो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनसाइडर इनसाइडर रो ऑथर किए जिवे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनसाइडर ठीक अछि बैचेंद्री पाल ठीक अछि देखो इनसाइडर आसीबो गोटे बुक यार ऑथर किए जिवे पीवी नरसिंह राव पीवी नरसिंह राव हला लिखिबो हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्तमान चेयरमैन किए अछंती राज्यसभा जे कि भाइस प्रेसिडेंट अछंती हला कारण आज तांके शपथ पाठ नेले मींस वर्तमान ताको पदवी कोन फिल अप हे गेला बुझिला ओके ठीक अछि हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ठीक अछि ब्रह्म समाज फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज कोन लिखिबा फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय ओके नेक्स्ट देखो नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम कोन आसीबो कोन अछि जेवलिन थ्रो हला एगुडा का आपण डायरेक्ट करिवे हला जेवलिन थ्रो नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया नेशनल गेम ऑफ इंडिया कोन हे परिबो राजा राममोहन राय एटा भूल लिखिछ कि राजा राममोहन राय 1928 रे हला एटा 1928 हबो हला 1928 रे से फाउंडेशन देथिले कोन जोटा कि ब्रह्म समाज हला कोडे ना कलकत्ता रे 1918 लिखि दबनी हला कंफ्यूजन रे रहि जिवो देखो कोन आसीबो हॉकी आसीबो करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखो नेम द वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ वेस्टर्न ओडिशा नोन एज मदर टेरेसा ऑफ ओडिशा हां मदर टेरेसा ऑफ ओडिशा बोली काहाको कहबा जे कि वेस्टर्न ओडिशा रो बिलोंग्स करंती पार्वती गिरी हला लिखिबो पार्वती गिरी ठीक अछि व्हिच प्लेस इज नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा काहाको कहबा देखो इजी क्वेश्चंस पे अछि म कहि छै इजी भी आसीबो क्वेश्चंस लेवल भी आसीबो हला तब लिखिबो दारिंगबाड़ी हला नेक्स्ट देखो द फेमस धनु यात्रा इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा दार्जिलिंग नहीं दारिंगबाड़ी हला हला लिखिबो देखो नेक्स्ट देखो धनु यात्रा कोडे आसीबो बरगढ़ रे आसीबो हला आर्य समाज होची स्वामी दयानंद सरस्वती हला 1865 रे आसीबो बॉम्बे रे आसीबार लोकेशन हला जदि आपन आत्मीय सभा पचारला तो आत्मीय सभा ही राजा राममोहन राय आसीबे हला तो दीटा जिंस रे आपन कंफ्यूजन हेबेनी केबे कारण ए दीटा ही आपन आर्य आत्मीय ब्रह्म समाज हला प्रार्थना समाज आत्मराम पांडुरंग एगुडा को कंफ्यूजन सृष्टि करे हला तो एगुडा को कंफ्यूजन न होबा आवश्यकता रही से मु आपन क्लास भी पढ़ाई गोटे क्लास रे केमिति मन रखिबो व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पीक कोन हिजबो भारतर हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया K2 गड इन ऑस्टिन बा कांचनजंगा हिजबो करेक्ट आंसर भारतर पचारछि हला भारतर कांचनजंगा हिजबो आंसर हला कांचनजंगा लिखिबो हला ओ स्टेट रासिबो सिक्किम रासिबो हला सिक्किम रासिबो 8586 मीटर हिजबार
टोटल हाइट हो। नेक्स्ट देख हु रोड गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड किए लिखिं? गोल्डन थ्रेशोल्ड तो लिख कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड आसवे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देख हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को शपथ पाठ किए करती कौन हो पार लिखे गोटे कौन सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे सीजीआई किंतु एग्जाम रे आपण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखिबे फुल फॉर्म नॉट शॉर्टकट केबे लिखिबेनी हला। एग्जामिनर चाहे जे आपण फुल फॉर्म लिखंतु। हु इज द फर्स्ट सीएम ऑफ ओडिशा। फर्स्ट सीएम ऑफ ओडिशा के जिवे आफ्टर इंडिपेंडेंस को बेस्ट हो हला। बिफोर इंडिपेंडेंस तो अलग कथा हला कौन हो पार हरे कृष्ण महाताब। ठीक अच्छे तो हरे कृष्ण महताब। नेक्स्ट देख पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। हाँ ठीक अच्छे आफ्टर इंडिपेंडेंट लिखो है जोड़े जब खाली फास्ट सीएम पचारे आफ्टर इंडिपेंडेंट लिखो है बिफोर से पीएम बोली कह जाऊला से पढ़ी पारादीप पोर्ट आसो गोटे ना जगतसिंहपुर आसो पारादीप पोर्ट कथा पचार जगतसिंहपुर। नेक्स्ट देख नेम द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशार सबुठारु बृहत्तम जिला कोटा जदि हम देखा क्षेत्रफल अनुसार क्षेत्रफल अनुसार सबुठारु बृहत्तम जिला कौन हो लिखिबो कौन दैट इज मयूरभंज है। नेक्स्ट देख नेम द लार्जेस्ट सब डिविजन ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे लार्जेस्ट सब डिविजन ऑफ ओडिशा आपन होमवर्क रहा है कमेंट बॉक्स रे लिखिबो से यूट्यूब देखुं तो से कमेंट बॉक्स रे पिन कर लार्जेस्ट सब डिविजन ऑफ ओडिशा देखा कौ मान करेक्ट अच्छी कमेंट बॉक्स रे पिन कर मुझे चेक करी है। नेम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया ये आप जानते मैंगो हो करेक्ट आंसर है। हु डिजाइनेटेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कौन आसीबो डिजाइन किए करथिले ना पिंगाली भेंकैया है।